होगा या नहीं होगा, या फिर गलत होगा या सही होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और जितना भी ओनियन की टीम ने जाना होगा, दिस इज नॉट अबाउट द पेपर कैलकुलेशन, दिस इज अबाउट द एक्चुअल मार्केट कैलकुलेशन एक्चुअली। और क्या होगा हमें भी पता नहीं हो सकता, जैसे बेचते समय रेट क्या था, आगे जाके क्या होगा, या अलग भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड दैट इज वाई, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि इट इज अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। मार्केट में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी जाके एग्री में आप काम कर सकते हो, अदरवाइज लिव इट फॉर एग्री, एग्री को छोड़ दो, भूल जाओ और दूसरे प्रोडक्ट्स में आ जाओ जो फिक्स में चलता है, और फिक्स में लेके आगे चलो। सो इट इज नॉट अबाउट द एग्री एक्सपोर्ट ओनली, इट इज अबाउट द एक्सपोर्ट, इट इज अबाउट द बिजनेस। ओके, तो ये सब देखने के बाद ऐसे लगा कि क्यों ना हम डिस्कस करके कुछ तो वर्कआउट किया जा सकता है क्या, कि इस सारी चीज को, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, want to get some experience and want to go ahead also, तो क्यों हम उसको अलग तरीके से, कि लाइक आपके इनपुट को लेके एंड टुगेदर व्हाट वी कैन डू, कि हमें जो रिजल्ट अचीव करना है उसको कैसे किया जा सकता है। सो लास्ट टाइम मैंने आपसे जो बात की थी फिक्स कॉस्ट शिपमेंट की, जैसे कमीशन में फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं एंड मार्केट वोलाटाइल है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें चलती है, तो क्यों ना फिक्स कॉस्ट पे वर्किंग किया जाए। तो जनरल डिस्कशन मुझे आप सबसे करना है, बिकॉज इफ रियली समवन इज इंटरेस्टेड इन दैट, देन आई कैन टेक इट अहेड एंड आई विल वर्क ऑन दैट, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए बस दिस इज द जनरल मीटिंग फॉर दैट काइंड डिस्कशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी होंगे उसमें, क्योंकि मुझे भी वो क्वेश्चंस जानने हैं, और फिर जाके हम उसको वर्कआउट म्यूचुअली कर सकते हैं। हाँ, यस सुकेश। मैम मिक्स वेजिटेबल शिपमेंट में भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा मैम, कि उसमें हो सकता है किसी चीज का कॉस्ट ज्यादा हो, किसी चीज कम हो, तो हम उसको एवरेज करके सेंड कर सकते हैं। नहीं, हाँ वो मैं बताती हूँ आपको, मिक्स के लिए बात करते हैं। सुकेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yeah. Actually, you switched the important information you told in Hindi that I couldn't able to understand. You said something very important, but you said it in Hindi. I couldn't able to understand that. That's it. Okay. Got it. So at least you know something that is important is going on, and it is in Hindi. And that's good. Okay. This meeting actually I have like organized because I seen like a lot of people are having the confusion, don't have the clarity. That is why I don't take the decisions. Like Coconut, you have worked a lot of things, and you have like got the confirmation from the people that they are agree to invest, and amount also you have discussed. But today the one message in the group that it is prices are going down, and then everything scenario is ultimately change, and it is actually change in 180-degree or 360-degree, we can say. Yeah, so it shows that you don't have like that understanding of the business, I must say, for the export point of view. Okay, or you don't understand, like you have not understand that business correctly. It is like either or. Okay, that I can understand. This is your start, all of you, and that is why might be the like lot of emotions and opinions and thought process are that is there. So that is okay. But with this scenario, I just like I was thinking like last time I have discussed with Onion Group that I'm thinking and I'm planning for that how we can do the fixed cost shipments. So I think like in when we are in the Bangalore, we have discussed the same. So the fixed cost shipment, right? But to go with ahead like banana, coconut, and onion. So if we will do this on the fixed cost, we need to have like clarity first, because fixed cost is not so much easy deal for me. Might be it is easy for you. Like you have seen the market now, how volatile it is. Okay, and if I am giving you the fixed cost, like all the risk is with me only. So to beat that risk, the one part is you should be continue in the market. This is the first criteria, first and last criteria, we can say. This is the only one condition we should meet, that we should be active and continue in the market. Then only we can like do this game. Otherwise, it is waste of time and waste of efforts and money, and it will create a lot of mess actually. No any good thing will be happen. Okay. Like for example, right now we have shipped one container, and okay, whatever the result, it will be declared. Either we should think like we can go ahead or not. The thing is end here. But in the fixed cost, like it will be the lot of mix will be created. So that is why just I want to discuss with you, not as a I'm giving my opinions. I just want to discuss with you what actually you want. Having like whatever the experience you have got till now,
what can be derived mutually beneficial, and how we can go ahead with this. Can I add my comments? So you can add. Yeah. So one thing, for an example, let us take this present scenario. If we are going to deal in a commission basis, right? So the entire ship can go down on a particular day, and I am sure many of the people are not that potential in terms of financial transactions. At least about, if I talk about myself, if I lost it one particular container, then that's it about my chapter. Okay. And I feel there are, after interacting with many people within the global fortune, many people are into the same bucket. So if we are dealing with the commission base, there could be one particular consignment where everybody will lose their hope, and they might not be available for the next group shipment, right? So what my suggestion is that if we are able to work on fixed basis, okay, we will try to put across the best of the best rate by minimizing our profit, the participants profit. Okay, but at least we should know the entire procedure. Okay, okay, we are going to send this particular invoice by adding the so and so, and we are going to get this invoice back, whatever the market in the other side, but at least we will get our profit, either 10 paisa or 25 paisa, let it be, but we are going to do this. So if we do in this way, I feel that everybody will do the continuous orders. We can provide you the continuous benefit. Our suppliers can get the continuous orders. So everybody will get benefited is what I feel. So might be my analysis would be wrong. So to keep the sustainability in the market, I feel it is fixed is the one of the best procedure. Yeah. Okay. Arey, bolo. That's what I feel, that it is better to deal in a fixed procedure. Yes. I understand. Anyone have any opinion? Yeah, I would also like to add on the same. One thing is what Sukesh said is right, but obviously, for us to be able to gain all the knowledge, we will have to consistently keep doing a few consignments. Only then will we be able to gain all the knowledge. Everybody, even right now in the onion shipment, did not gain all the knowledge. They gained, some of them have gained knowledge in some aspect, the others in another aspect. A few of us have gained as the knowledge in a few, consolidated aspects, like even the export paperwork as well as the sourcing part of it. And many of the others have only been able to derive theoretical knowledge and understanding. So the way forward is, obviously, if you want to learn with lesser capital that is available, is to go in for group shipments and at least do 4 or 5 shipments so that we can gain and master the actual processes of how we are going to do it. Having said that, obviously, big shipments will be better for us because we know where we stand, even if it is lesser amount of profits. In fact, even those profits may not actually translate into profits for some, because once we start traveling and sourcing, that may go into expenses. But for me, that is fine because I at least know that I'm not going to lose a lot of money in the price fluctuations. So it's not going to be a 30-40% loss in capital because we bought it at a rate which was like 20 and we sold it at a rate that was like 13 or 14. So that is one plus. Having said that, what I believe would be the key is to understand what is going to be the credit period that you would need from us before the money can come in, because that would also enable us to understand how much of a corpus each individual will have to have. Now, obviously, it will again keep going back and forth. How many people are interested? How many are not interested? Then how much can each contribute, etc., etc. But I believe that a corpus of at least 3 to 4 shipments minimum is something that an individual will have to proactively think about and keep for himself if he wants to partake in the group shipment, so that all of us in the group shipment are also secure, because we will have to understand this is not just one shipment. If we are going to be committed to 10 shipments or 12 shipments, even if one person or two people after a couple of shipments drop out, the commitment
of ensuring that the cycle goes on till end will then fall onto the shoulders of the others, and maybe they will have to have the burden of shouldering the guys who went out also. So these two aspects are very important to understand: the credit period that you may need, and then based on that credit period as to when the money comes back, what is the quantum of corpus that each individual will have to hold and pledge and not use it anywhere else, so that 2, 3, 4 shipments may go before the money can start coming from you, or we have at least some amount of a buffer with us. Because every shipment also again is not going to be at the same rate. If this shipment we say is going to be at one dirham 10 paise, the other could be at 70 fils, the other could be at 1 dirham 50 fils. So again, the quantum of money that we'll have to put into each shipment will also vary. So on an average, 3 to 4 shipments corpus will have to be kept ready by each individual. So they should be ready for that before they commit. That is another important aspect from the supplier's end or the exporter's end towards you, so that we are also secure and you are also secure. Okay. So you mean to say like corpus, how much it is required? That should be understand first. Credit period? By each individual. Yes. Yes. Okay. Okay. So supposing you say that I need a credit period of 21 days, for example, then we have to know from where exactly you need the credit period. Once it reaches Dubai, or the minute it leaves from here, when does that credit period start? And then we will have to reverse calculate that if it takes you 21 days, where's the money? And if you're needing a consignment every week, that means at least 3 to 4 consignments will have to be sent to you before the money can start coming in from you. So that's the level of corpus that we will have to have with us. And for us to have a collective corpus, each individual contributor will also have to have money for at least 3 to 4 consignments kept on the side, because that is what is going to contribute to the corpus. So we'll have to do that planning and only then move forward. That's true. Okay. It means less credit period is important. Just a comparison between exports and the domestic business. In my analysis, why people prefer exports? Just one thing would be the financial stability or the financial growth, then the branding, whatever. Okay, it can be of anything, right? But when it comes to the financial matters between domestic and the exports, in my view, the money realization is much faster in the domestic business. And I am not generalizing for the entire exports. There are few products I have seen the people in person where they have received the exports, and that too 100% at once, right? I have seen, but those products are different, and the network is already stable. I can't all of a sudden jump in and do the wonders in that particular sector, right? Right. So, but when I deal with the vegetables where there is a continuous consumption and there is a continuous requirement in the market, and if I want to see the money realization between domestic and the exports, the domestic is where I am going to get hard, like 3 to 14 days is the maximum credit period where my money will get realized. But when it comes to the exports, the money realization is very late, like more than a month here. So even if we have a solution for this money realization, whatever the investment we do today, if there is any credit period, lesser credit period, even that will work for us. Yeah. So for your question, actually for domestic and export, we can see you just need to understand the transit time for getting the material in hand and then releasing that money. Yes, in domestic, if you are supplying to me in India, hardly 2 days is the maximum time, we can see. 1 day, half a day, or 2 days. So that is why the credit period is 14-15 days. Actually, we are here. So I am getting material in 2 days time, and I'm giving you money back in 10 days, week, or 2 weeks time, right? So if we can consider about the export, let's consider Dubai, which is the nearest country to India. 4 to 5 days is the transit. So after reaching the vessel, we can say material, when I get the material in the commission shipment, we are releasing the money, like after selling all the material, we are preparing the sales report and we are remitting the payment immediately. So if you consider that scenario, domestic se bhi zyada jaldi release ho raha hai wo, if we can consider the commission. But export has the
criteria of the procurement, grading, sorting, packing, stuffing, logistic part and transit time. That is why we are thinking that it is the like higher period of the money realization. This is difference of the domestic and export. Second thing, if we are selling in domestic also, if you are supplying to supermarket, anybody knows about that. Supermarket, they are giving minimum 30 days to 60 days to 90 days credit period. In supermarket also, in 45. India also. This is the criteria. Why? Because they are giving you the fixed rate, but they are taking all the risk on their head, and they are covering that risk with your like material and money management and everything. They are losing the money, they are gaining the money, but yes, they are keeping the capital. Why? Because they need to like rotate that money in the market. Then only they can repay you. For example, if I will receive your shipment and I am giving you fixed cost, and when I sold, same consider karo ki like 25 dirham. This is your fixed cost for coconut. I received that shipment, and if the market goes down to 20 dirham, I need to pay 5 dirham per bag from my pocket immediately to you, until and unless I recover that money from the market. This is the case. So in this scenario, if we are talking about the business, we need to consider the win-win situation for the both the end, not from our end. Then only the business model can be sustained. Otherwise, no. I am thinking for the fixed cost because of like I'm seeing all the things in practical. Why the group shipment initiative has been taken? If you, any one of you have sent one container on your own name with your own investment, now consider the risk, what you are taking. Whatever the loss you have done, it is about your own loss. And I have done that losses on my own. Whenever I have done the export, I have taken the more than 50-60% of the loss by own. And that is why I have taken this initiative that for my students, it should not be happen. Can we do in the group that can be the losses will be divided? It might be like in the less investment, might be the percentage will be higher, but you are at least losing 25,000 or 30,000. But I have lost 5 lakhs rupees in one consignment also. And it is not about like I have the capacity, that is why. It is not about that. I also started from the scratch. And that is why this initiative has been done. It is not about I am crossing you, but it is just I am telling you what is the actual ground situation in the market, because we are talking about the agriculture, not about any other product. If it is other product, yes, definitely we can do that. Even in other products also you can think. You have told me like 100% advance, yes it is, but the volume of that shipment is very less. Value of that shipment is very less. Then only you can get the 100% advance payment. Otherwise, no. In the second phase, if your product is like you are manufacturing something, then if I am a buyer of your product, I will give you some advance for the working capital that you can manufacture that goods. But other amount of the capital, I will give you in the credit only. This is the general logic of the market for every product. Then only business can grow. Regarding the domestic and export, domestic is about the sales and purchase in the market, but export is about the volume only. So volume cannot be played in the advance and cash. No one can deal that. This is actually reality of the market I'm telling you. Handicraft, yes, you can deal in the 100% advance. You will get the 100% advance. But your volume once grows, you will not get the 100% advance payment. Consider you are at that side, you are at importer side, you are purchasing something. If that product is like you are taking 2 months to sold that in the market, 3 months to sold in the market, how you can pay from your pocket 100% advance? So understand business just, or otherwise I have told you like every product is not suitable for everyone. So that is why we can choose the product according to our plus and minus. And yes, definitely it is there. But if we are talking about agri, because I have my base in agriculture, we have that market in agriculture. That is why we are just thinking like how can be done like better for both of us. This is just what we are doing. And it's just discussing. I'm not giving my suggestions and opinions. Yes, Triveni. It's all practice. 4 plus 3 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 4 plus 3. Sorry, कोणाचा तरी background. Ha, background voice is there.
Bol. So whatever you have shared, it is a practical proven fact. I want to know if we do a fixed price, based on based consignment, what will be the quantity and frequency? You may not have that exact figure, but at least approx, because to me it doesn't make any sense if I do only one container in a month. Never. That's true actually. Never. Even I will not take it on a fixed cost if it is Correct. only one container, because that is like totally lost from my side. True. And see, that is why I told you, importer and exporter, it is not about me. If you will deal any person in the market, you need to understand there should be win-win to both of you. Then only the business model will be go there. Otherwise, no. If either आप पैसा बना रहे और वो नहीं बना रहे, तो how it can be like they will work with you? नहीं हो सकता ना, ये मार्केट का रूल है ये. वो भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हमने उनके फायदा भी देखा और उन्होंने हमारा फायदा देखा, तो ही बिजनेस आगे चलेगा. दिस इज अबाउट दैट. ओके, कमिंग टू द पॉइंट, लाइक कितने शिपमेंट्स करने पड़ेंगे, तो ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 3 महीने का मॉडल है, ताकि एग्रीकल्चर में एटलीस्ट मिनिमम 3 months यू नीड टू बी इन द मार्केट, then only you can like have a cumulative plus and minus, then you can work out कि how much will be there, plus or minus. पकड़ के चलो कि 4 कंटेनर्स मैंने भेजे, 3 कंटेनर्स में स्ट्रेट अवे लॉसेस हो गए, तो to need to recover that losses, at least I need to have 3 containers in the market again. Then only the rotation will be there to like rotate the consignments, and then only you will be also in the profit. Yeah. Otherwise, no. Rahi baat दूसरी, fixed cost में, if you all are thinking, because I have done the fixed cost shipments also with the students also. So let me clear you one thing in that. If when you are doing your first consignment, and if I will give you, not me, from anyone in the market, if they will give you the fixed cost rate, still I will bet you can't match up that rate. So please be understand that also. You can't match up that rate. Why? Because इसका मतलब ये नहीं होता फिक्स कॉस्ट का कि आप सारे खर्चे जोड़ो, आपका 5% 10% लगा और आपको बोल दो कि yes, this is my price, and customer will agree that. No, because customer also knows that price. So आप कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं माना जाएगा. For example, अगर लॉजिस्टिक में आपका कोटेशन आया 2,50,000, but I also have taken quote from my logistic and they have given me 2,30,000, इसका मतलब मुझे पता है कि 20,000 you are paying extra. So why I should give you in the fixed cost that? तो फिक्स कॉस्ट वर्कआउट की जाती है एज पर द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मार्केट, मतलब उसके इसके बेस पे वो फिक्स कॉस्ट वर्कआउट की जाती है. सो why I am telling you that it is the continuity of the supply should be there, because in the continuity only you can like reduce your costings. So it might happen that in the first container you will not make profit in the fixed cost also. It might happen. Understand it in the practical way. It might happen you can't make the profit. Otherwise it will happen like you can make the losses. Say consider like 5% losses will be there for the fixed cost also, but you know the like thing कि मेरा 5% ही losses है. I know the bandwidth. अगर मैंने इतना डाला तो मेरा 5% ही loss है. And how you can cover that losses in the next container to the next container, because you are reducing ultimately your cost. जैसे like I have said last time also, if you have hired the transporter and you have paid for them 45,000, and if you deal with them that I have the 4 containers in a month, so tell me how much cost you will take. So ultimately might be they will reduce 2,000 3,000 at least. So in the cumulative 3 into 4 12,000 will be your saving. So in that way the prices will be reduced and the like costing will be reduced in that, and this is only your profit margin. Yes, Dinesh. Madam, looking at this market trend, the ups and downs in the prices, I feel that it is we are making this one. One of my contacts in Polachino, he said it was not related to coconut. He said one of the supplier from India sent 100 containers of onion, and the price crashed. Somewhat, are we not responsible like this, like doing continuous and
sending in large numbers of containers. So to mitigate this, we need to do the analysis of container arrivals there as well. So that at least the market will not go down drastically. So if we start sending without doing the market analysis continuously, container after container, obviously the market crashes. We will not get our prices. So I think we need to work on this as well, the supply part. How many containers are going every day? What are the products like onion, coconut, or banana? We need to do some maths on this. We should not send containers continuously to the market. That's true. But you have told the example. If I will give you I will take your example only. You told me, right, 100 containers they have supplied in 1 month. Yes. In a not 1 month. At once is one of the suppliers sent. I think my contact said he's a politician or somewhat. 100 containers came at a time into the market, and he is happy to sell at whatever the market price is there, because he wants to do some some dealing or whatever it is. That's his or her business. He wants to get some money out of it. That's all. It came it crashed drastically, and the sufferers were the others like us. Yes, I totally understand. So that is why with your example only, I will tell you, this is actually unlogical to send 100 containers at one time. And we are not doing that. No, it was intended, not illogical. It was intended. Yeah, it is intended. I can understand. So what you are telling, that is actually the true fact. We need to do the market analysis, but in the agriculture, there are multiple factors affecting on the market. And if you do the analysis from the last 4 months, you can't predict the market with that 4 months analysis, like what will happen next. You can't predict that. Because like seasons are changing. Weather conditions are changing. Rainy seasons are changing. Okay, demand supply gaps are changing. Like many factors are depending on that. And I have done actually, because like when I made the losses in the like before the COVID, we have done the same analysis in that market. But every time the situations are always changing. So what is the mean period? Like how we can derive the mean with that? At least we can be in the steady in the market, but with the number of quantity should be reduced. Like if I will say 1 container per week only, second container in the second week, third container in the third week. Okay, if the market will be crashed, it will not sustain in the 1 month period. So either I can lose in the 1 container, but I can gain in the second container, or either I can gain in the third container. Yes, Varshan. I agree with Dinesh sir. क्योंकि क्या है ना, यहाँ से कितना कितना आ रहा है उसका भी कैलकुलेट करना जरूरी है, लेकिन पता चलता है कि आज कितना प्याज मार्केट में आया है या आने वाला है. दे पीपल नोज अबाउट दैट कि इतना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पुणे का जो मार्केट है उसमें मैं देखती हूँ जब भी, तब उन लोगों को पता होता है कि हाँ इतना माल आया और इतना आने वाला. Yes, अगर आप दोनों की point को, I'm not disagree with that. I'm totally agree with that. We need to do that analysis. But whatever, as per my experience, it has any base for that. Because जब भी आपने decide किया कि अभी इतना pass आएगा या नहीं आएगा, ये information आज की है. When you take the action, it is already 2 months you have like finished. और जब भी आपका कंटेनर वहां पे पहुंचेगा, तब तक situation पूरी change हो जाती है. So what is the base of that analysis? Where you are missing the time. दूसरी बात, लाइक सिर्फ ओनियन के लिए चेक करो. ओनियन के लिए हमारी बात ही हुई थी, जैसे मैंने ग्रुप को भी बोला था, बिफोर आई गोइंग टू दुबई, सेंड द कंटेनर एट दैट टाइम. जब भी मैं दुबई भी होगी तब आपका कंटेनर वहां पे आएगा, तो दैट विल बी बेटर. लेकिन फिर भी हमारे डिसीजन के चक्कर में या फिर जो भी कुछ एनालिसिस सब चल रहा था उसके चक्कर में व्हेन वी हैव सेंड, और अभी जब गया तब मार्केट की सिचुएशन पूरी चेंज हुई थी. दिस इज एक्चुअली बिकॉज एक्सपोर्ट इज अबाउट द टाइम. Don't lose that important factor. Never. With your analysis, consider everything in the with analysis and everything for your decision. But never lose the time factor. क्योंकि यहाँ पे decision जो भी होता है वो time के ऊपर होता है. Even for the coconut also. Whatever my analysis is showing, जो मैंने इनको भी बोला था coconut के group को भी, कि send that container before I am reaching to Dubai.
लेकिन they want to take the analysis and everything. That is true actually, that is good part. I am not telling anything else. But अभी क्या हुआ कि तब जाके कोकोनट के प्राइसेस 24, 25, whatever I am doing the analysis last 2-3 months, coconut is only the stable prices, only 24, 25. Then the price is now increasing 28, 30 तक गए हो. तो एक स्लैब आता है पूरा कि जब भी कोकोनट के स्टेबल प्राइसेस थे, नाउ इट इज इंक्रीजिंग. कम है तो ज्यादा बढ़ने वाले हैं और ज्यादा हुए तो डाउन होने वाले हैं. दिस इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. तो अभी क्या हुआ कि वो प्राइसेस बढ़ने लगे. जब भी हमें पता चला कि प्राइसेस बढ़ रहे, देन वी कैन टेक द एक्शन. जब तक आपका कंटेनर वहां पे पहुंचेगा तब तक मार्केट नीचे आने के लिए चालू हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट ऑल्सो. व्हेन द प्राइस गो अप, people are taking action and they are sending the containers. Now the demand is less, where supply is higher. I totally agree with you, मैम. क्योंकि हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में नए प्लेयर्स आते रहते हैं और पुराने लोग उसमें से निकलते रहते हैं. किसी को कभी ज्यादा लॉस हो गया, और तो इस वजह से हम जो ये एनालिसिस की बात हो रही है, हम एक देख सकते हैं उसको. बट क्योंकि मार्केट है, मार्केट में नए लोग आते रहेंगे, तो कभी उसका डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने लोग कितना शिपमेंट्स भेजेंगे. हम एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि इस सीजन में थोड़ा सा रेट्स बढ़ते हैं, इस सीजन में थोड़ा सा रेट्स ऐसे स्टेबल रहते हैं. और अभी दिनेश जी ने शायद आई गेस 100 शिपमेंट का एक एग्जांपल दिया. तो ऐसे मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, हर मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह बल्क में शिपमेंट इसलिए कर देते हैं ताकि जो नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट के अंदर, उन लोगों को वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दे. उनकी ये स्ट्रेटेजी रहती है, और ये स्ट्रेटेजी हर बिजनेस में लोग यूज करते हैं कि जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं उनको मार्केट में रहने ना दे, क्योंकि बड़े लोगों के पास ज्यादा कैपिटल होता है, सो दे कैन ऑलवेज लूज सम मनी. और छोटे जो प्लेयर्स होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं है. सेम सिनेरियो अगर आप देखोगे, सारी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं. इवन स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, हर कमोडिटी बेस्ड जहाँ पे डेली प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे चीजें हर मार्केट में होती है. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल और फ्रूट्स के अलावा क्या हम दूसरे कमोडिटीज में भी हम देख सकते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा शायद फिक्स प्राइसेस मिल सकता है, लाइक बासमती राइस हो गया या एनिमल फीड्स हो गया. क्या हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ भी देख सकते हैं क्या? थैंक यू. उसके लिए इशू कुछ भी नहीं है. we can think on that also. Like why I am not taking risk of that commodities, because I have not developed market for that commodities, and I can't give you guarantee of the price or payment. Okay, for the agriculture I have my own setup there and I have my own base there, so I can give the guarantee. Like अभी जितने लोगों भी जो भी containers आएंगे, I will pay from my pocket if anything has happened, because I am paying 100% guarantee for you. Okay, this is my risk I am taking. But for other commodities, the market development is in the process. Okay, 2 साल एक तो कोविड है, इसके चक्कर में agriculture I have like prepared the base there. But for other products, it is in the process. Development is going on. Once it is developed, yes, definitely we can try for the other products also. Like for the like rice, processed food, spices, it is in the process. Okay, क्योंकि मार्केट में कस्टमर की मतलब बायर की गारंटी मिलना, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, और वो इतने जल्दी नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सेइंग दैट मार्केट डेवलप द मार्केट, इट इज एक्चुअली इटसेल्फ इज अ बिग टास्क. एंड वंस इट इज डेवलप्ड, यू आर ओके, यू जस्ट गो, you just walk on that road, nothing need to be done. So for other products, yes, definitely I am working on that. So वो जब भी होंगे, yes, definitely we will work on that products also. So rice की भी बात अभी चल रही है, लेकिन I am not sure, I can't take that guarantee. That is why I have just slowly I am taking the steps for the rice and spices. Okay, this is only the scenario for that. But जैसे मैंने कहा कि एनालिसिस होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कितना हम उसके ऊपर डिपेंड रहे डिसीजन के लिए, that should be derived. Otherwise you will not take action. Otherwise you will not done any export. कुछ भी नहीं हो सकता उससे. हाँ बोलो. हम एग्री के फ्रोजन पे भी हम काम कर सकते हैं ना? कर सकते नहीं, वही तो तुझे बोला ना, सब प्रोडक्ट्स में काम हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है. आई एम टेकिंग 1 by 1 प्रोडक्ट. तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैंने कहा है, आई विल टीच एवरीथिंग यू, आई विल लाइक सपोर्ट गाइड यू एवरीथिंग. यू ऑल्सो कैन ओपन द मार्केट. उसमें जो भी हेल्प लगेगी, आई एम देयर फॉर यू. तो यू ऑल्सो ओपन कैन मार्केट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रॉम माई साइड. जो भी जैसे हो, वी कैन गो अहेड.
Okay, even like for the why I'm working on this fixed cost and everything. See, just one example I will give you. Even I am talking with Bahrain also. One of customer is there, and I am discussing with they are taking the goods from the fixed shipment. मतलब फिक्स कॉस्ट पे लेते हैं वो, ठीक है. ओनियन लेते हैं, चिली लेते हैं, कोकोनट लेते हैं, ग्रेप्स, बनाना वगैरह वो सब लेते हैं वहां पे. बट आई हैव नॉट मीट विद दैट पर्सन पर्सनली. मतलब मेरी जो बात हुई है आइदर ऑन जूम, आइदर ऑन फोन, व्हाट्सएप, लाइक ऐसी हमने बातें की है. सो आई डोंट लाइक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन. आई नो लाइक आई कैन ट्रस्ट ऑन देम, बट लेकिन कितना ट्रस्ट करना चाहिए उसके लिए भी कुछ तो बात है ना. तो मैं कब ट्रस्ट करूंगी? तो यू कांट इमेजिन ऑल्सो आई हैव वर्क आउट एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया टू बहरीन. क्या होता है इंडिया दुबई बहरीन, क्या होता है, हाउ द मटेरियल गोज देयर, व्हाट आर द चार्जेस इंक्लूडेड, व्हाट आर द ट्रांजिट टाइम, मार्जिन क्या होता है, कॉस्टिंग क्या आता है, पेपर वर्क क्या लगते हैं, एवरीथिंग आई हैव वर्क आउट फॉर दैट. जस्ट नीड टू लाइक, अभी इसी मेरे ट्रिप में अभी का मेरा प्लान था कि आई विल विजिट टू बहरीन, बट इट इज समहाउ नॉट हैपेंड. बट अभी चल रहा है मेरा कि ओके आई विल गो टू बहरीन, आई विल मीट दैट पर्सन, एंड फिर जाके मैं वो एक बार मुझे कंफर्मेशन हो गया ना, ओके आई विल टेक दैट रिस्क नाउ. तो शायद जब भी नेक्स्ट हम काम करेंगे तो सिर्फ दुबई मार्केट हमारे लिए नहीं रहेगा, फिक्स कॉस्ट भी होगा तो भी, so we can route that consignment to Bahrain also. Might be we can have the chances to get the good prices also. But for that, if I will give my commitment to that person, I need to have backend with me for the continuity of supply. Otherwise, it will be in the wake. What is the like challenge for me to develop the market for you all people? Because I not seen like that continuity, that business understanding. I know you are startup, but whatever I am seeing in the market, वो अगर मतलब जैसे हम समझ के चले तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वर्कआउट किया जा सकता है. इट इज नॉट ऑलवेज विन, इट इज लॉस एंड विन एंड देन विन विन होता है. यस सुकेश, दिनेश, अनिशात. Ma'am, the only solution to this, we need to look beyond Dubai market, ma'am, to build this one, because either we know that there are big fishers, big guys who are playing with new entrants like us. The solution would be to find alternate markets. Like you quoted the Bahrain as an example. Why can't we work on this as well instead of focusing on only Dubai market? So if we get the fixed price for our consignments, then definitely we will work on continuity as well. We can increase our volume. As far as onion and coconut banana is concerned, I have spoken with my supplier and they are ready to supply throughout the month, whether it's weekly or fortnightly. They are ready to support us in terms of supplying. So if we get a fixed price or a better marketplace other than Dubai, definitely we will work establishing our footprints there. Yes, definitely. But that is why I told you, to develop the market, other market, we need to first establish in one market first. Then only that continuity of supply will be happen there. Yeah, let us focus on other than Dubai only. Why we need to start with Dubai? Because we know since we are new into these, we can't compete with the big fishers. We'll start off with other markets. No, whatever Dinesh you are telling, I totally agree with that. But what I am trying to tell you all, that to develop the other market, first we need to have trust on that market and that person to whom we are sending the fixed cost shipment. Okay, in Dubai, why I am telling you Dubai? Because I am here to take whole guarantee of your payment. But we can't trust on other person unless and until we have that shipment, like business relationship, transactions and everything. It will take time to develop that, but it will. Okay, and regarding the fixed cost, if we are afraid about the fluctuation, and that is why I'm working in Dubai market, that forget about the market, I am giving you the fixed cost. Ma'am, if the trust is the issue, can we initially at least go towards the ECGC? Yes, we can. That is the worst scenario. We can consider ECGC as the worst scenario. The problem is again with, you will lose the motivation if it is happened in the first case only. Okay. Because understand the practical, ECGC is always there. They will give you the claim also.
But the second part is the claim procedure. It will take like at least 3 months working time. Yeah. Yes. Yes. As per their like manual and circular, right? So 3 महीने लगेंगे ऐसे उन्होंने कहा है. So it will take more than 3 months also. It will take 5 months, 6 months also. Then you will lose the motivation. You will not supply again to that market, to that customer. Even you will not supply to anyone until and unless you will get the payment. So, madam, two things. First one, I heard that Dubai is the place where we can re-export. Since we have the lot of network there, why can't we look into the re-export and where again the same thing? Sukesh, same thing I have explained now. I am just looking that option only to re-export from Dubai to Bahrain. Okay. But again, the same case. I have not met that person, and we can't depend on one customer. Yeah, that is okay. First is cleared. Second, if you talk about the fixed prices, I think can you tell us the volume and the tendency? What is the required expected anticipated tendency? What are the products you required? What is the fixed price? Like for an example, today in domestic market there is some price, and we will quote you something. So definitely you are not going to agree with that. So how the negotiation part you are going to take care? See, वो हमें अभी म्यूचुअली एक दूसरे को समझ के मतलब वो करना पड़ेगा. सो द चैलेंज इन द फिक्स कॉस्ट इज दिस ओनली. बाकी कोई चैलेंज फिक्स कॉस्ट में नहीं आएगा. जैसे अभी देखा हमने कि जिस दिन ओनियन परचेस किया गया, फॉर एग्जांपल द डे वी हैव परचेस ओनियन, इट इज 24 rupees. Okay, and the next day onion cost is 20 rupees. So in the fixed cost also, either you will lose or I will lose. This is the scenario. Because like if we are quoting today, we are discussing the fixed price today, you are getting the market prices and everything, and you are getting the product with 24 rupees, you are adding all the expenses, and you are giving me the code that, okay, 20 dirham is the price of coconut we can give you. And we will negotiate in that price. And okay, we have finalized, okay, 19 dirham is the price or 20 dirham is the price. It's done. Okay, this is one example we can consider. So 20 dirham, I have finalized price today. When you will ship the container, the time frame should be there. Now this price will not valid. Like if I will discuss this price on Monday, today is Monday, you need to ship that container on the Friday vessel only. Then only it is applicable or valid. Otherwise, no. Okay. And now you have finalized the price 20 dirham, and tomorrow the market go up. You purchased 20 dirham, but now your costing goes 24 dirham or 22 dirham, but you can't back out. Understood. This is the scenario. You cannot back out. But the situation will be go reverse also. Like you have, like today you got the price of 24, but tomorrow the market will go down. But for me, it is loss. For you, it is profit. Okay. This can be happen. So fixed price means every container you are going to every container you should, because market is not in anyone's hand. So fixed cost per container it will be. No, first week of December. Yeah. You have told first week of like every container we will decide the like container price of one. First week of December you said 20 AED, and second week of December you might say 19 AED. So that is depend on like what you quote me. I will check with the market, and based on that we will discuss and decide. Okay. So it is not like every consignment will be on the same invoice. It will be like everything can be modified. Everything. Yes. Okay. Understood. And what is the tendency? Weekly ones or weekly two? I mean, now it is depend on the product actually. Coconut, it is only monthly 2 containers, because the consumption pattern is not so high for coconut. Okay. Either we can say like monthly 1 container to the start, or monthly 2 containers to the start only. Okay. For banana, we can say weekly 1 container. Understood. Okay. And the payment terms, like same, right? Again from the bill of lading date, or how that actually I'm working out, like I'm working that cycle, like how it will be fitted for both of us, like it will be beneficial. Okay, understood. Okay, so if everything is fine, so can I give you the code tomorrow? I will reach to all my people
in the group. No, that is okay. You can. That is not an issue. But for the fixed cost, it will not go as a randomly that okay, you will send me one container. We should have the agreement with in the place. Okay. Between both of us, between both of our companies, that you are agreeing these clauses, whatever the clauses in the agreement, we will mutually decide and discuss and finalize that. And then it will be as per the agreement only. Because it is not, should not be the condition or case that you are sending one container, again in the second container, the prices will go reverse or down or higher. And you are like telling, no, I can't do that. So it will be like create so many like problems and mess in the market to be. Correct. So it should not be the case. So if it is an agreement, then we can't randomly pick the companies. It will be only single company. It will be as per the agreement only. Because this is the like this why this is working out for you all people, like how it can be, because I'm physically there in the market. That is why I can work out this. Yes. Otherwise it will be not possible for me also. Right? And this is the specially we are working out, like is there, it can be happened. So this is just a trial base we are working out, and if it is good, it will be go run. Okay, we can develop the re-export market also for that. But at least something should be like in the pipeline. Understood. Yep. Okay. Thanks. So then, ma'am, is it possible for you first just to work out some modalities for each commodity, at least a rough specific draft that for onions I would need 1 container every week, and you know, how many containers do you need and what would be your credit period, from where you would start, stuff like that. So there is something that we can take home. Each individual can go through the proposals that you have sent, the point of proposal, and then see if at all there is something in it for us and whether we would like to participate or not. Because again, each individual will have to make a decision in the group whether he can or he cannot, and then obviously give his say. And then once he gives his say, then he'll have to see how many of them are there and slowly and steadily move forward in fine-tuning the agreement. So it has to start either ways. So I think maybe some rough proposal from your end will at least give us some idea to dwell upon. That is why actually I thought to take this meeting first to discuss with you all what is your opinion also. I need to understand that, and then we can work out the agreement based on that. And you will also go through that. It will be just in the draft modalities and all. And then again we will take a meeting, and then again we will discuss, and then only it will be finalized. Yeah, because again, just getting one consignment was a challenge. Now we will have to actually look at how 10 consignments can be sent over, and now decision making, if at all we do get into it, decision making will have to be pretty quick because it's going to be on a week-to-week basis. Yes. So we will have to understand how to work it out. So time to decide, do the costing, understand what the market scenario in Dubai is, as well as over here in India or Nasik is, and then make a decision and give you the proposed rates. It have to be done in a very, very, very quick manner. Plus Yes, 25 people or 15 people who are there in the group. Because you should be on the ground the decisions about the cost. Yeah. So that is something that will have to be really done at a very quick pace. There's no time to wait. Yes, for that only just I will work out at my end, like what you ask for that. And I request to all of you that these are the 3 commodities we are looking: onion, banana, and coconut. For onion also, I will suggest like do the analysis. What are the price fluctuation, range of the fluctuation in the market? Like what we are seeing, as per my experience, coconut is like, we can say ranking first in the less fluctuation. Coconut is a commodity in the less fluctuation. Okay. Second is banana, and then third is onion. Because as per the consumption, as per the growing pattern, as per the like how much people are like in this one season, how much containers are going. Coconut इतने ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि उतना consumption नहीं है. Even banana is also fruit. So वो कोई खाता है कोई नहीं खाता है तो उतना consumption नहीं. But onion is required for everyone. So this is the basic analysis you can do with the commodity. And based on that, we can decide like what is the range of fluctuation actually in the market. So गिरा भी कभी कितना गिरेगा, ज़्यादा आएगा तो भी कितना जाएगा. And based on that, you can decide.
I was there in Nifad this last weekend also. And so I met up with a few of our known farmers. And obviously, I was traveling further also. So I spoke to them about the prevailing scenarios over there in terms of the onions. Because when we initially went in November 1st to kickstart the process of seeing how we can source, and we were about 10 or 11 of us who had gone there, the onion prices were almost high, and it seemed like, from there it could start getting lesser because, or at least many were still thinking it may go higher because the supply of the summer onions is getting lesser and lesser. There is not much coming into the market, and because of obvious fluctuations with the rain and the rainfall having been delayed and going away, people were not able to sow the winter onions so quickly. And therefore, winter onions were going to be coming in late, and the summer onions were getting over. So, of course, prices were going high. But by the time we went in the second time, the prices had already started going down from 30 to 24. And the day we made the deal of 24, by the time we sent it, the onions were already available at 2021. Yes. And so, by the time it reached there, it was 50. It is already like. So I asked the guy, I asked them, what is the scenario? So say that it was again speculation. And since the past 2 years, since rain has been getting delayed, 2019-20, just before COVID, rains were delayed. And there were showers which had come in December too. Last year also, in a couple of years, it seems like the rainfall has gone away. The passing showers have happened, and then the rain has come again. And therefore, the November-December winter crop was being spoiled. And December, there would be a kind of a shortage. So what happened this November was that farmers were having the supplies, but they were not pumping it to a great extent into the market in November. Suppliers also in some ways thought that the supply of the summer onions is drying out, and winter onions are still going to take a while before it comes because the sowing had just started, because the rainfall was over. But actually, the farmers were holding the summer supply in anticipation that if it rains in December and the winter crop gets spoiled, the prices will shoot up much more, and they will be able to get a better price for the summer onions. Yes, so towards November, they realized that's not what is going to happen. And as soon as now the winter onions started coming into the market, they had to start dumping their summer onions. Because once the winter onions are fully into the market, the summer onions will not have any of the value. Yes. So that is what happened, and it brought the prices down. And people started really, selling off. Maybe that is one of the reasons that guy sent 100 containers also away, because he wants to finish his stuff also. Yeah. So I do agree. Analysis we can do. Yes, analysis we can do, but there is only an extent to which we can work on. But for you all, like I have done export in all three commodities, in onion also, in coconut also, in banana also, and I have done I have get the experience and done the analysis also. For onion, actually, I have sent 3 containers, and we have made the profit in all 3 containers. I have done the calculations, and for that also, I have told to a whole group actually to the start when you are going for the procurement, like कि वो अगर farmer से लेता है तो cumulative में prices हमें दे सकता है क्या, वो भी check करो उसके साथ. लेकिन ये एक कंटेनर के लिए मैचअप नहीं हो सकता, वो भी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. They should not be happen in one container. अगर हमने प्लान किया कि मुझे महीने में 4 कंटेनर भेजने, I want to ship 4 containers in 1 month, then I can be with that supplier, and you will do the purchase in whole month, not for the container purpose. Okay, I will require 100 tons of material. You will do the purchase in 100 tons of material in whole month. Whenever the price go down, you will just purchase at that time. This should be the scenario, and we have done the same thing actually for the 3 containers I have sent. So we have just purchased 1 ton, 2 ton, 5 tons, 7 ton, 4 tons randomly with the cumulative prices, average prices, and then the average out it is going less. So for onion, it should be done. Second thing, what people are doing in the onion, for the onion, they are stocking the onion. When the onions are less in the market, they are purchasing the onion and they are stocking the onion. And when the rate goes up, they are selling in the domestic and international. This is the again second cycle for the onion. So you need to have that go down and warehouse and जो टाल structure होता है ना वहाँ पे, जो onion वहाँ पे store किया जाता है. Yeah, so वो onion के लिए करना पड़ता है. तब जाके onion का market आप beat कर सकते हो. For banana, you need to be connected with the farmers. You need to buy the farming.
जितना मैंने ओवर किया है, आप अगर डायरेक्टली जाओगे सप्लायर से बोलोगे कि मुझे बनाना चाहिए, वो तो सारी कॉस्ट मिला के एज पर द एक्चुअल मार्केट आपको प्राइस देगा, लेकिन बनाना के लिए बनाने के फार्मिंग आपको लेने पड़ते हैं. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव द बैक एंड आल्सो विथ यू, कि अगर बनाना के 4, 5, 6 हैंड्स गए, 7, 8 हैंड्स भी लिए मैंने, तो जो भी बचा हुआ बनाना है वो कहाँ पे जाएगा? So either you need to sell it to the wafers factory, or either you need to give it to the local जो कार्ट पे बेचते हैं उनको दे दोगे क्या? तो आपके कनेक्शन से क्या डोमेस्टिक मार्केट में? क्योंकि जो भी सप्लायर है आपको उसका भी प्राइस आपसे लेता है वो. So where the people are earning margin, that is why the back end analysis should be there. और वो एक कंटेनर में नहीं हो सकता. This is actually what I am trying to tell you. In the coconut also, I have visited to Polachi more than 6 times before sending my first container. 6 times, every supplier I gone there. In the farming also, I met with the farmers. Every supply chain I have worked out. और तब जाके पता चला प्राइसेस के रेंज बहुत फ्लक्चुएशन से लोग फार्मर से, लाइक अगर एक सप्लायर से मैं मिली थी कि जिससे मैं 400 ट्रीज परचेस कर सकती थी, मतलब 400 ट्रीज का जो भी फ्रूट आएगा आई विल टेक दैट. 200 ट्रीज का जो भी फ्रूट आएगा आई विल टेक दैट. और अदरवाइज ओके आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद द डोमेस्टिक मार्केट, तो मैंने उसको कहा कि चलो आप परचेस कर लो, आपकी कॉस्ट वहां पे लगाओ, क्योंकि आप जो भी बचा हुआ फ्रूट होगा वो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे. सो योर वर्क इज ऑल्सो देयर, योर एफर्ट्स आर ऑल्सो देयर. आई विल गिव यू 1-2 रुपीज एक्स्ट्रा, बट वॉट एवर द फ्रूट कॉस्ट जो भी होगी उसके हिसाब से मुझे मेरा कंटेनर का बेस चाहिए. एंड इन दैट वे ओके वो प्राइस वर्कआउट की जाती है. लेकिन उसके लिए भी फिर आपको उसके साथ टाइप करने पड़ेंगे एटलीस्ट सम कंटेनर के लिए, तब जाके वो आपके लिए वर्कआउट कर पाएगा. दूसरी बात कोकोनट के लिए, आई हैव सीन विद द फार्मर्स आल्सो इन दैट देयर कोकोनट फार्म, लाइक अगर 30 डेज का जो कोकोनट होता है, ग्रीन जो कोकोनट होता है वो मतलब पेड़ से निकाला जाता है और फिर वो रखा जाता है, मतलब पेड़ के नीचे ही रखा जाता है और उसके ऊपर वो ढक के मतलब वो रखते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 40 डेज. तो बहुत सारे लोग जो है ओनियन के कोकोनट के एक्सपोर्ट में स्पेशली दे आर परचेसिंग ओनियन व्हेन दे आर प्लकिंग फ्रॉम द टीज. सो तब की प्राइस कम है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना आगे वाली चीज से, तो तब का भी परचेस किया जाता है. तो तब की कॉस्ट अलग होती है, क्योंकि वो ओनियन का मतलब बीच वाला पार्ट है, वो पका हुआ ओनियन नहीं है, अभी राइपन हुआ या फिर जो भी फाइनल कंडीशन में वो वाला कोकोनट नहीं है, सॉरी. तो ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स है पूरे प्रोडक्ट के इसमें, और वो आपको मतलब बाय हार्ड वहां पे जाके ग्राउंड पे वो स्टडी करके फिर वो सारे कैलकुलेशंस मैचअप करने के हाउ वी कैन बीट अप द मार्केट. दूसरा वेजिटेबल्स में अगर आप बोलोगे तो पीपल आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देन ओनली यू कैन बीट द प्राइस, अदरवाइज नो. So this is like that. You just not, it is not the practice like you just go in the market and get the supplier quotation and you will quote the market. It is not like that. मैम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो रिस्की मैम. आपको पता नहीं वेदर क्या होएगा, आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है. इसमें रिस्क नहीं है वो बताओ मुझे. यस मैम. तो सब में है ना. बिजनेस इज अबाउट द रिस्क, व्हिच इज यू नीड टू मेक द कैलकुलेशंस. फार्मर इज टेकिंग द रिस्क, इवन वी आर नॉट एट ऑल टेकिंग द रिस्क. मैम मैं देखता हूँ अपने यहाँ ग्रीन चिली का सीजन चल रहा है और इस टाइम वो सेल करते हैं रात में, पूरा तोड़ते हैं दिन भर में और रात में वो सेल करते हैं और नेक्स्ट डे क्या प्राइस है उनको भी नहीं पता चलता. बस एक बंद still they are doing the like taking that efforts and taking the risk. या मैम इसमें ये भी होता है ना, जैसे बड़ी मंडी में भेजना होता है तो रात में अपना कर लिया और उसको कह दिया कि तुमको इतने में देना है. अब वो क्या करेगा, वो तोड़ के लिया तो उसको बेचना ही बेचना, उसके लिए तो वो प्रॉब्लम है, वापस लेके नहीं जाएगा. वही तो मैं हमेशा कहने की कोशिश कर रही हूँ. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो, दैट पर्सन इज टेकिंग 100% of risk and they are doing things, but still they are consistently doing that. Why? Because they also know if I am making the losses, I am making the profit also in this business. That is why they are sustaining on there. Otherwise no. Business is about this only. I'm not telling you motivation and GAN. I'm just doing my own. I'm on the ground only. I'm doing the same thing. Like also I have explained you all, like might be Onion people only. Like I have done the Assam seminar. याद आया किसी को? Yes ma'am. So मैंने पहली बार आसाम की मतलब सेमिनार किया था. But the first seminar in Assam I have organized. I have paid more than 60,000 rupees in that one seminar, with the hall and other things, and only 4 people are there in the room and no one converted.
So I made the losses of 60,000 rupees at one place only in the 15 days. It doesn't mean that I should not continue ahead. This is about the business. छोटे का मतलब ये नहीं कि आप भी लॉस लेके चलो, बस ये समझ के चलो कि अगर उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो आगे उस धंधे को कैसे बैक एंड एंड फ्रंट एंड को ज्वाइन करके कैसे कर सकते हैं. दिस इज योर स्किल. रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी बिकॉज हाई प्रॉफिट इज हाई रिस्क ओनली. नहीं तो फिर जॉब सिक्योर है ना हमारे. Like, we'll have to learn the tricks of the trade. Everything is not very straightforward and simple that every time we'll say this is our cost and this is the selling price and we'll get the profit. It will only, I think, come once we do it 5 times, 10 times, and of course, learning and experiences are there lifelong. Yes. But jab karenge and we keep analyzing, only then over a period of time we'll realize how to play the game smartly, analytically, and then see how we are going to convert it into profits. I mean, I don't think every single yes, one we will तभी make जाके profit. होगा. इसीलिए मैं practically क्यों बोल रही हूँ? Because I am experiencing in this market actually. और हर even the business farmers are doing the same. Many a times the farmers are doing the same. इस बार अगर देखेंगे कि the tomato prices were high, the next year everybody starts planting tomatoes anticipating. Sometimes this is where they go wrong, and everybody plants tomatoes, and next year the prices are completely less because the supply is humongously high and the demand is not there. Then they realize that okay, we did a wrong thing. The tomatoes में पैसा नहीं है. Then they go out of tomatoes, and so the tomato is at ₹2.50 right now. I was passing by from Nifat to Saputara. There was a mandi, and it was ₹2.50. Some of the farmers were not even plucking it from the trees. They just left it there to dry off because the cost was not enough for them to even take it to the mandi. Right. So I was discussing something about tomatoes with one of my colleagues, and this is what he said. Even he has 12 acres of tomatoes. So yeah, some level of analysis will have to be done, and we'll have to continuously work for a while to, and maybe we should just take a couple of products and a couple of markets and focus and try to learn. That is also okay. And then master that before we go on to something else. That's what I feel. एक्चुअली ये अभी देखो कि ये सब करने का मकसद क्या था. नहीं तो मैं बोलती ना कि आप इंडिविजुअली करो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू. लेकिन कौन करता है इंडिविजुअली? 10 लाख का कंटेनर भेजने के उतना मतलब वो भी होना चाहिए. नाउ वी आर डिवाइडिंग ऑल द रिस्क. दैट इज व्हाई एटलीस्ट वी हैव टेकन दैट एक्शन कि लाइक चलो करते तो है कि एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा. यू लर्न समथिंग. एटलीस्ट आपको पता तो चला कि मार्केट चलता कैसे, प्रोडक्ट होता कैसे है, या फिर जो भी कुछ प्रोसीजर होती है वो कैसी होती है. Why this initiative? Why we are together? Because at least how we can mitigate the risk being together in the market. Either we can take that advantage, or either we can build up by ourselves. Yes, Varsha. मैम मैं अभी उसको समराइज करती हूँ. हम तो पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करते वक्त उसका कैसे हिसाब रखना है कि कौन से टाइम पे उसको परचेस करना है, उसको स्टोर कैसे करना है. कोकोनट के लिए पूछा कि जब उसको प्लग करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो प्लग करते वक्त रेट कम होता है, स्टोर करने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है. Right. अगर फिक्स रेट पे अगर आप कर रहे हो हमारे साथ एग्रीमेंट 3 months का, तो मतलब है कि हम जब प्लगिंग होता है कोकोनट का, दैट टाइम वी कैन परचेज दैट फॉर नेक्स्ट कंटेनर्स. और जैसे कंटेनर्स के लिए कर सकते हो आप, क्योंकि उसको प्लग करके करने के बाद एटलीस्ट यू नीड टू कीप दैट कोकोनट एटलीस्ट फॉर 30-40 days, डिपेंड ऑन द लाइक. राइट. और जैसे कि अगर अनिल का ले गया तो उसके बाद 1-1.5 प्राइसेस डाउन हो जाएंगे उसके, तो उस वक्त पे एक गोदाम लेके उसको स्टोर करते तो भी हमारा अच्छे से वर्क हो जाए. राइट. मतलब ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज का अगर ध्यान रखते हैं तो इट मे वर्क फॉर रिड्यूसिंग आवर ओरिजिनल कॉस्ट. और जब हम भेजते हैं तब उसके बाद लॉजिस्टिक का देखना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग का देखना चाहिए, पैकेजिंग का देखना चाहिए, और शिपमेंट जो होती है उनके साथ अगर हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर है, ये है कि अपने इतने कंटेनर जा रहे हैं तो कम कौन देगा. तो इन सब चीजों पे अगर ध्यान से हम लोग बारकाई काम करेंगे तो वर्क होगा, शायद रेट्स कम हो जाएंगे. जो अभी तक के डिस्कशन है, इज इट? दिस इज द राइट ओनली. वही तो करना चाहिए.
मैंने लास्ट टाइम ही आपको बोला था, लाइक जो भी मेरे लॉजिस्टिक्स है या फिर आपके अगर कोई होंगे, तो आई हैव एक्चुअली डिस्कस विद देम कि अगर मैं आपको 10 कंटेनर देती हूँ तो कैन वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्रेट रेट्स आल्सो। तो वो भी शिपिंग लाइंस करने के लिए रेडी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो मतलब बिजनेस इज अबाउट द वॉल्यूम ओनली। रिपीटेशन जब तक आप किसी को बिजनेस नहीं दोगे तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। इट्स अबाउट एवरी स्टेक होल्डर इन द बिजनेस, नॉट वन, नॉट मैं और आप नहीं। इम्पोर्ट एक्सपोर्टर की बात नहीं चल रही, बीच में जितने भी है उनको भी अगर धंधा मिलेगा तो दे विल आल्सो वर्क आउट ऑन द प्राइसेस। बट इसमें आई थिंक अगेन व्हेन वी आर लुकिंग एट वेयरहाउसिंग, it will be a completely another aspect also to start studying, because उसमें भी costing आएगा, capital intensive थोड़ा हो जाएगा, because initially we have to put the capital to rent सबके it. लिए ओनियन का वेयरहाउसिंग करने का अभी मत सोचो, बिकॉज दिस इज द बिग गेम। मतलब वो गेम 5-10 कंटेनर का नहीं है, जितना मैंने वर्कआउट किया उसके ऊपर, इट इज मोर देन द 60, 70, 100 कंटेनर्स। वो गेम उतना है, मतलब करोड़ रुपीज ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी देयर। तो वो कब आएगा, जब हमने लाइक 10 कंटेनर में ओनियन को जान लिया एंड वी आर श्योर अबाउट दैट कि वी विल गो विद द ओनियन ओनली, ओके, देन वी कैन मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, लाइक हाउ इट विल बी। तो वो हो सकता है अभी, मतलब उसके लिए जाने से बेटर होगा कि एटलीस्ट पहले हम शुरू में छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेके, जैसे हम काम करते हैं वैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, कि एटलीस्ट हाउ वी कैन मेक अ प्रॉफिट और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड सेट अप बिजनेस इन द नेक्स्ट 10 कंटेनर्स। And this time, right now, the game for onion will also be a little different from what we would have been previously, because ये अभी winter onions की बात हो रही, तो इसमें भी वापस बाय करके स्टोर करने का सवाल आता ही नहीं, बिकॉज शेल्फ लाइफ इज वेरी नहीं आता। ओनियन कब परचेस किया जाता है? जान फेब मार्च, मतलब आगे वाले सीजन में किया जाता है, समर अनियन पोस्ट मार्च, राइट। तब जाके ओनियन के प्राइसेस डाउन होने लगे, तब जाके वो परचेस किया जाता है। सो दिस इज जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जितना मैंने 5-6 साल मार्केट में काम किया उसके ऊपर बेस क्या है कि ये सब करने की जरूरत है, और वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन बीट द मार्केट। लेकिन जो भी लोग सस्टेनेबिलिटी मॉडल रन कर रहे हैं उनकी बैकएंड सप्लाई चेन दिस इज सो स्ट्रॉन्ग, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। यू कांट इवन थिंक लाइक बनाना के लिए, लास्ट टाइम मैंने एक पैक हाउस में गई थी, उसके 50 कंटेनर के बॉक्सेस आके मतलब वेयर हाउस में पड़े थे, and now you can think the costing. The costing will come down because so yes, they definitely can beat the market. First now for 50 containers packaging material. Yes. So they have the plan in the case, like अगर आपने आज एक कंटेनर का बॉक्स लिया तो शायद आपको 80 रुपए आएगा, 90 रुपए आएगा, 100 रुपीज आएगा। If we are talking for the 10 containers boxes, definitely the rate will be reduced, because the die cost will be reduced, paper cost will be reduced, labor cost will be reduced, everything is going to reduce. This is about the business. Your logistics to transfer the same packaging like material. yes definitely, like दो बार में हो जाएगा। एक ट्रक में अगर आप एक कंटेनर का लोड लेके आओगे, यू नीड टू पे 15-20,000 रुपीज। उसी सेम कंटेनर में 2.5 कंटेनर, मतलब उसी सेम ट्रक में 2.5 कंटेनर या 3 कंटेनर का लोड आता है। इन दिस वे द कॉस्टिंग्स विल बी रिड्यूस्ड एक्चुअली, और इसीलिए आपको कंटिन्यूटी बना के रखना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और वो बनाने के लिए आई नो लाइक किसी के पास, एक के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि 40-50 लाख का कॉर्पस रख के वो काम करे, and that is why we are looking again this ki like how we can together it can be happen. If you are really interested for the agri export, then only this is the case. So two things can be worked out. One is the Dubai market, and then slowly and steadily to reroute definitely to Bahrain or wherever. Yes, once this rotation will be in the place, we can definitely with that confidence we can develop the other market, because like for example बहरीन को जब भी भेजने के लिए, मतलब मैंने सारा जो एनालिसिस किया था बहरीन के लिए, ओमान के लिए, तो अभी मुझे ये पता चला कि अगर वहां पे भी अगर मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया एंड दे विल रिफ्यूज टू टेक योर कंटेनर, देन व्हाट इज द सेकंड प्लान विथ यू? सो अभी मेरे पास दुबई मार्केट है तो आई नीड नॉट टू बी केयर फॉर दैट, आई नो कि मैं सेल करूंगी वहां पे। ऐसी बहुत सारी बातें। दूसरी बात, री एक्सपोर्ट के लिए फॉर योर रेफरेंस, जो हमारा इंडिया से कंटेनर जाता है दैट इज 40 फीट कंटेनर, बट जो री एक्सपोर्ट के लिए जाता है दैट इज 50 फीट बराक। What is barak? What is बराक जाता है, बराक। Barak is a truck, right? राइट, वो ट्रक होता है, वो 50 फुट का होता है, वो रिफर ही होता है, 50 फुट का होता है।
तो अभी यहाँ से जाएगा जो 40 फीट कंटेनर है, वो 40 फीट अगर उसमें एम्प्टी किया तो 10 फीट का और भी जगह बचा है ना वहां पे, तो उसको फिर से मुझे मार्केट से फिलअप करना पड़ेगा इधर. So these are the challenges also there to re-export the consignment from Dubai to other country. Plus Hamali. Yeah. Plus वो सारी चीजें आएगी एक्स्ट्रा फिर से वहां से. तो ये सारी चीजों को मिटिगेट करने के लिए, if we know the continuity of supplies there, we can manage that things in the market. So there are a lot of factors actually. मतलब discussions के लिए बहुत सारी चीजें हैं. So this could be one. किसी के अगर कुछ ओपिनियन हो तो बता सकते हो. So अभी के लिए तो इतना हुआ है कि ओके, आई विल गिव यू दैट मोडालिटीज ऑफ फिक्स कॉस्टिंग जो भी कुछ है, लेकिन आपसे मतलब कितना पॉजिटिव है वो मुझे थोड़ा सा चाहिए. देन आई विल इन्वेस्ट माय टाइम इन दैट एक्टिविटी. Yes, ma'am, we are totally interested. At least I am interested. I have interest in it. क्योंकि इसके लिए है ना कि अगर ये इतना 10 कंटेनर का प्लान भी करना हो तो उसके लिए उतने लोग चाहिए, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी डिवाइड हो सकती है. देन ओनली इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. जी, एटलीस्ट 10 यहाँ कंटेनर भी हो तो एटलीस्ट आई थिंक 3-4 लाख तो एवरी इंडिविजुअल एटलीस्ट विल हैव. मतलब उतने लगेंगे. yes, yes. 3-4 लाख का कॉर्पस तो रखना पड़ेगा फॉर वन कमोडिटी. इफ ही इज प्लानिंग टू बी इन वन कमोडिटी, he may not be able to do all the commodities also, but of At least course Yes, coconut आपके we लिए should एक start सजेशन with भी at हो least सकता है कि अगर आप नंबर ऑफ पीपल रेडी हो तो वी कैन स्टार्ट विद वन कमोडिटी ओनली फर्स्ट. वो भी किया yes, जा that is सकता है yes, madam. इंस्टेड ऑफ yeah, टू. that is what. हाँ, दानिश सर आपका म्यूट हो गया. sorry, onion is done. Not trying to put anybody else behind or anything, but since one container is gone and there is a kind of a team, others can also join if they are interested. लेकिन We can ओनियन work के out लिए the modalities for onion. या ओनियन इज गुड एक्चुअली, बट ओनियन के लिए एक समझ के चलो, जैसे मैंने अभी बोला कि कोकोनट फर्स्ट आता है लेस फ्लक्चुएशन में, देन सेकंड इज बनाना एंड देन थर्ड इज ओनियन. बट मैडम अगर जैसा मैंने भी देखा है अनियन की मार्केट में लोग अनियन की मार्केट में पैसे बीट करते हैं क्योंकि इंडिया में वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टोर वो स्टॉक करते हैं. दैट इज द ओनली रीजन दे आर एबल टू डू बिजनेस इन एक्सपोर्ट एंड इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली वे अगर हमें अनियन के अंदर सक्सेसफुल होना है. अदरवाइज अगर हम 2 भी कंटेनर करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट निकालना लकी हो सकते हैं हम 1-2 बार, बट अदर देन दैट हम नहीं कर सकते अनलेस वी स्टॉक इन इंडिया ओनली. तो अनियन को हमें स्टॉक करना पड़ेगा मंथली. और जैसा आपने सजेस्ट किया था कि जब सीजन होता है तो 8 से 10 रुपए के बीच में हम कम्युलेटिव, जैसे जब जब प्राइस डाउन मिल रहा है हमें तब हम उसको स्टॉक कर रहे हैं. और उसी हिसाब से मतलब महीने का एटलीस्ट 200-300 टन हमारा महीने का हमें एटलीस्ट स्टॉक करना पड़ेगा. देन ओनली वी बी एबल टू. यस डेफिनेटली पुष्कर. लेकिन उसके लिए क्या है ना कि इट इज लाइक एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई फर्स्ट फॉर ओनियन टू स्टोर ओनियन. वो कैपिटल इन्वेस्ट बहुत हाई है. उसके लिए फिर से उतने लोगों को कलेक्ट करो, फिर उनसे वो इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाद में मतलब उसको शिप करो, तो वो बहुत बड़ा गेम है एक्चुअली. और उस बड़े गेम को खेलने के लिए पहले नंबर ऑफ पीपल जो बोलते हैं ना कि हम सेम अंडरस्टैंडिंग पे है, सेम लेवल पे है, वो होने चाहिए एंड देन वी कैन प्ले दैट गेम. मतलब मैम वो पूरे साल का गेम खेलना पड़ेगा. हाँ राइट. वो उस उतने लेवल के कमिटमेंट के लोग होने चाहिए साथ में, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है. अदरवाइज दो अगर एक भी बैकआउट होगा, 2 भी बैकआउट हो गए तो फिर वो सब मतलब गड़बड़ हो जाएगा उसमें. 2.5 लाख फॉर वहां पे मतलब खाली लैंड का. तो किसी ने मतलब ये सब आपके लिए है कि एक तो these are the 2 ऑप्शंस एक्चुअली. एक ने मुझे ये सजेस्ट किया इसलिए मैं बस बोल रही हूँ, दैट इज नॉट माय ओन ओपिनियन. एक तो पहले मैंने यही सोचा था कि आप सब मिलके करो फिक्स कॉस्ट, वी कैन वर्क आउट एंड हाउ इट कैन बी गुड. लाइक वो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, एग्रीमेंट क्लॉजेस म्यूचुअली हम साथ में कैसे काम कर सकते हैं. उसके लिए यू कैन वर्क आउट इन द मार्केट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, लॉजिस्टिक, वो सब करके और कैसे कॉस्ट इफेक्टिव जा सकता है उसके ऊपर काम किया जा सकता है. The second, like someone from student only, they have suggested me like, मैम अगर इतना सब कुछ मतलब हमें करना है, पता नहीं फिर फिक्स कॉस्ट कितनी मैचअप कर पाएंगे नहीं पाएंगे, मतलब दैट इज ऑल्सो द चैलेंज एक्चुअली.
क्योंकि आप सब लोग चालू कर रहे, तो ये हो सकता है क्या कि मतलब हम आपको देंगे, आप ही करो शिपमेंट एंड वी विल लर्न एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, बट यू विल ऑन द फ्रंट फॉर द डूइंग। सो हम बैकएंड I पे didn't सारा understand. सीखेंगे ये कैसे किया जा सकता है। सुषमा जी, can you explain it in another way? ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। अब आप लाइक भी फॉर करो। एग्जाम्पल उनका ये कहना था मुझे कि जैसे अभी फिक्स कॉस्ट तो करना है हमें, जस्ट वन ऑप्शन आई हैव सजेस्ट टू यू ऑल कि लाइक आप फिर से ग्रुप करो और फिक्स कॉस्ट का वर्किंग करो एंड वी विल लाइक मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 कंटेनर्स 10 कंटेनर्स एंड वी विल वर्क आउट द मॉडलिटीज टर्म्स कंडीशंस एंड वी विल फाइनल इट एंड द कंटेनर्स विल बी गो। तो ये दिस इज वन ऑप्शन जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ओके। एंड सम वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्लोबल फॉर्च्यून दे हैव सजेस्टेड मी लाइक मैम ऐसे किया जा सकता है क्या, दिस इज वन ऑप्शन आई एम सजेस्टिंग टू यू, लाइक इफ यू कैन वर्क आउट ऑन दिस। उनका कहना था कि फॉर एग्जांपल अभी आपको सारा वर्किंग बैकएंड पे करना पड़ेगा, ओके उसमें भी जैसे अभी देखा कि प्राइजेस कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, सो देयर इज ऑल्सो द रिस्क पार्ट कि जैसे हमने बोला 24 आज है, हमने प्राइस फिक्स किया और कल जाके 20 हो गया, तो परचेस आपका मतलब ये होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, डिपेंड ऑन लाइक मी ऑल्सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे किया जा सकता है क्या कि लाइक अगर चलो हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखेंगे 50,000, लेट्स टेक एग्जांपल, सो यू विल इन्वेस्ट इन द 50,000, वी विल प्लान 4 कंटेनर्स, ओके, बट यू विल गेट 50,000 बैक, सो व्हाटएवर द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके आई विल बेयर दैट। सो उनका कहना था कि ओके वो आप देख लो, क्योंकि लॉस हुआ तो हम बेयर नहीं करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम बेयर करेंगे, दिस इज नॉट फेयर। सो बेटर वी वांट टू लर्न एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकली वो कैसे होता है, सो यू हैंडल ऑल द थिंग्स, वी विल इन्वेस्ट, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट इज योर रिस्क एंड इन दिस वे वी कैन लर्न द थिंग्स। और अगर हमें लगा फिर कि ओके दिस इज द सेट सिस्टम नाउ, सो वी कैन बी इन दैट सिस्टम and we will start working on our own. Seems a good system. I mean, seems reasonable also. The only expense then we would have additionally is the people who are going to go onto the ground for sourcing and all that. That will be a learning. That will be a learning. So this is one option they have suggested. मैंने बोला उनको कि ठीक है पहले हम स्टूडेंट से बात करते हैं, सबके साथ बात करते हैं and what other like every one of you wants, तो उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। अभी उसमें भी मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके लिए नो लॉस नो प्रॉफिट है फॉर लाइक अगर हम अंडरस्टैंड करें, बट फॉर मी लाइक फिक्स कॉस्ट में भी मुझे वो वर्कआउट करके उसमें भी लॉसेस हो सकते हैं, आगे जाके अगर वो कमीशन पे गया या फिर फिक्स पे गया तो उसमें भी लॉसेस हो सकते हैं। सो दैट इज माय रोल, लाइक हाउ आई विल मिटिगेट दैट रिस्क, आई नीड टू वर्कआउट दैट आल्सो, बट दिस कुड बी द वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन उसके लिए भी हमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट वी शुड प्लान दिस वर्क एज अ प्रोजेक्ट for the 5 containers, say minimum. Then only it can be mitigated. But what is the plus in that for you all people, if I will say, like if as a third person I can see, okay, you will get to know everything on the ground practically, but without any risk. Your capital is secured and you are getting the learning also. This is only plus. That sounds better. Yeah, but the minus if anyone is thinking like इसमें केस में क्या होगा कि शिपमेंट मेरे नाम से जाएगी because I am taking care of all the risk and all the operations and all, so you are just learning that. So decision मुझे लेना पड़ेगा कि कहाँ से लेना है क्या लेना है, you can give me the solutions, options, resources, but we need to fix out कि like वो किसके साथ करना पड़ेगा, because I need to have like set up all that background with me, तब जाके वो प्राइस को मैं reduce कर पाऊंगा। Also what I feel is that, see, since it is group shipment and you are telling us to get into an agreement, so we, for an example, I get into an agreement with you and after completing 2 shipments my group might get dissolved, right? And there are other people who want the opportunity to get it to move consignments on the company. So is it fine, let us we get into an agreement for 1 month of 4 containers, that is one rule, and whatever the 4 containers the cost that we need to procure at the initial place, so that there will be no hiccups in between when it comes to the financial matters. So whatever agreement is for 1 month for with one company, and whoever wants to participate, they need to invest at the very first time itself, so that
financial hiccups will not come. The person who is signing with you, he will ensure that he will forward you all the consignments in time. I think we can also think about this option. There might be some negative scenarios we can discuss. Yes, definitely. We can work out multiple options with that. Yeah. It is not an issue. So second month you can deal with the other person, where other new people, obviously global fortune may new people will join, and the people who already seen the profits with the current fixed prices and consignments, even they show the interest, and they will, so it will be like a consecutive and a continuous business between you and the people of global fortune. That can be done in this case. Like you can make an agreement with one company. Then ये ऐसे भी हो सकता है लोगों के लिए कि like for like say example, I have done agreement with your company, तो 4 containers आपकी कंपनी के नाम से जाए. Yes, correct. Yes. So उसके लिए ये भी किया जा सकता है कि like we can do agreement with as a group one, and 4 containers का ये हो सकता है कि कॉर्पस एक ही कंपनी में लाओ पहले, and 4 containers 4 लोगों के नाम से भेजो. That can be also done, but वो सब मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा. Correct. वो भी हो सकता है. Yes, correct. अपनी कंपनी के नाम से बेचने का. हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि इधर वैसे भी किया जा सकता है कि 4 कंटेनर 4 लोगों के नाम से भेजो. वो भी किया जा सकता है. लेकिन मैं सोर्सेस वो सारे एक ही जगह पे होंगे. 4 कंटेनर के लिए फिक्स होगा सारा. मैम लेकिन ग्रुप फिक्स होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अगर हम लोग 3-4 महीने का एग्रीमेंट किया और बीच में कोई बंदा जाता है तो बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसीलिए that is actually true. It can be happen. That is why you need to take a investment upfrontly. क्योंकि हम लोग फेस करना पड़ा था एट द ऑनियन के टाइम पे. 2 लोग. I know that, and it is happening every time. Completely safe game we can't play. Okay, either from our side or from your side, nobody can play complete safe game, right? But the options are available for us now. One is that fixed price, dealing with the fixed price. Number 2 is that we are going to deal with only one commodity as of now. Since it is experimental, we are going to deal with one commodity. So the people who are interested in banana, onion, and coconut, they will get pulled into one particular commodity initially. I think this can be done. So onion, in coconut itself, we got some 21 people who showed interest, and there are few people who showed interest in banana. We can add 10 more people. Even the risk is getting further narrowed down. I think we can do complete safe game. Nobody can play. Yes. I'm not saying safe game. I'm just saying कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करने वाले, we must know that. इतना होना चाहिए कि 20 करेंगे. No, your voice went down. Ma'am. Hello. मुझे सुकेश जी का आइडिया अच्छा लगा, और सुकेश जी के आइडिया के ऊपर हम थोड़ा सा और अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं. दैट वे वी कैन सेंड 4 शिपमेंट्स और 4 अलग लोगों के नाम पे. तो 4 लोगों के नाम से भी मतलब जा सकता है पर वीक अलग अलग. इस हिसाब से थोड़ा सा और भी मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ताकि मैडम को भी ना रिस्क रहे और हम लोगों का भी रिस्क हम थोड़ा सा कम कर सके. और मैडम का भी जो रिस्क है, क्योंकि ऑब्वियसली मैडम रिस्क लेंगी, 2 जगह लेंगी, इंडिया में भी लेंगी, फिर आगे भी दुबई मार्केट में भी लेंगी, तो हमें उनका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए. आई थिंक. कौन बोल रहा था? पुष्कर था वो. मेरे को समझ में नहीं आया. Ready, sir. Pushkar, can you repeat it again? जी श्योर. मैं ये कह रहा था कि कैमरा ऑन करो. कैमरा ऑन करके जब भी सुनते हैं ना लोग तो जल्दी समझ में आता है. श्योर मैडम, श्योर. हाँ, क्या आपने बोल रहा है
4 एक ही कंपनी के नाम पे बोलने से नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो सुकेश जी ने आइडिया दिया है, सुकेश जी का आइडिया काफी मतलब अभी तक के आइडियाज में ऑब्वियसली उनका आइडिया थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं ये कह रहा था कि हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि हम अपना रिस्क भी थोड़ा सा कम कर सके। हाँ। और हमें मैडम का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मैडम को भी कभी मतलब हम लोगों के भले के चक्कर में मैडम को ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ठीक है। ये तो करेक्ट है ना, किसी का क्योंकि भला मैडम करने ने के लिए बता बचूंगी दिया है। नहीं मैं फिर बाद में। जी एग्जैक्टली मैडम, वो तो हमें दोनों साइड का सोचना चाहिए, हमें अपना भी सोचना है क्योंकि हम एज ए लाइक बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सामने वाले का भी देखना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला प्रॉफिट करेगा देन ओनली वो हमसे वापस बिजनेस करेगा। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज हमें दोनों साइड का सोचना चाहिए प्रॉफिट। और सुकेश जी का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा तो हम उसके ऊपर श्योरली काम कर सकते हैं। और क्योंकि सभी को रहेगा कि शिपमेंट्स जा रहे हैं तो उनकी कंपनी के थ्रू भी जाएं, दैट वे दे कैन आल्सो गेन नॉलेज। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जब आप इन्वॉल्व होते हो तो आपका जो मनी ट्रांजेक्शंस होती हैं तो उसके बारे लेकिन में भी मेरे आपको को नॉलेज। इसमें क्या समझ में नहीं आया है, इसमें जितना लोग पार्टिसिपेंट होता है हर एक को एक कंपनी रहता है, करेक्ट? जी तो हर आदमी को मौका मिल रहा है ना, एक ही ना 4 को मिलता है? एग्जैक्टली नहीं, सभी को मौका मिलेगा इसमें सभी को मौका मिलेगा जैसे मैडम ने कहा कि हम अगर चार सभी को मौका चार नहीं लोग। मिलता तो मेरा नाम निकाल दे। जी नहीं, यहाँ पे आई एम श्योर सभी लोगों को मौका चाहिए, सभी लोग एक्सपीरियंस के लिए ही आए हैं। मैं भी वही कह रहा था, सुकेश जी ने भी जैसा कहा और मैडम ने भी वही बात बोली कि हम एक मंथ में 4 शिपमेंट भेजेंगे तो 4 अलग लोगों के नाम पे शिपमेंट्स भेजेंगे। तो वो आइडिया काफी बेटर है क्योंकि 4 लोग अलग नामों से जाएगा तो चारों लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। और उनकी कंपनी के अंदर भी मतलब उनको जैसे बैंकिंग जो इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके पैसे अकाउंट से जाते हैं और आपको EBRC जो है वो भी आपको उसके बारे में भी फिर नॉलेज मिलती है। तो वो एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। और देन आप इंसेंटिव्स भी हैं तो आपको जब इंसेंटिव्स आपको कैसे क्लेम करने हैं वो नॉलेज भी फिर मिलती है आप लोगों को। तो वो सुकेश जी का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। To execute this, Sushma ma'am need to do a agreement with all the 5 parties, right? Yes, 4 people in a single agreement or 4 different agreements with लेकिन each उसमें party. एक बात है, ओके। लेकिन हर आदमी ने पहले ही डिसाइड करना है जितना लोग हम हैं उतना बार पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा हो गया, हम चुपचाप रहेंगे, नहीं रहना ऐसा। नहीं इसलिए नहीं सर, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ चल गया इरಬೇಕು दोनों का चल गया अभी। ऊपर से गया। हर आदमी के पास उतना इन्वेस्टमेंट रहना है ना। ठीक, मैं देता हूँ, हर आदमी के पास है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ एक शिपमेंट के लिए 20 लोग है, ठीक है, और दूसरा शिपमेंट के लिए 10 लोग है और तीसरा शिपमेंट के लिए 10 लोग है, टोटल 40 पीपल हो गया ना। 40 पीपल पहले 75 डिपॉजिट किया, अभी 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा। 25,000 का डिफरेंस है अभी। 40 लाख से रहा तो हमारे पास 4 कंटेनर बेच सकते ना। तो किसके पास डिपॉजिट करना है? वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स रिगार्डिंग दैट। नहीं, दैट कैन बी रेड्डी जी, वो सब मतलब बाद में प्रोसीजर का पार्ट है, वी कैन डिस्कस दैट प्रोसीजर पार्ट, ओके। लेकिन इसमें एक चीज मेरे लिए है, like if we are making the like group of people and on the 4 companies we are sending the consignment, like to whom I can make an agreement for the continuity. तो 4 कंटेनर्स का एक ही बार पैसा आना है। करेक्ट मैम, अगर हम लोग हैं जिनके कंपनीज है, जैसे कि ये सबको मिल पार्टनरशिप फर्म की तरह वर्क करके फिर हम उनके करोगे तो हो जाएगा। उनका रहेगा, उनका एक MOU से बनाएंगे कि का है, आप उनके ग्रुप के साथ काम करो। No, I don't agree with that. ये पॉसिबल भी नहीं होगा जब भी लीगली इसके कोई काम स्टैंडिंग नहीं करेगा रहेगा। उसी को तो नहीं होगा, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको पता है, अभी उन्हें देखा आपने कोई लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म का मतलब ही लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ 4 है, हर बार आपको 4 कंटेनर
है 4 कंटेनर के लिए 4 अलग अलग लोग काम करेंगे, तो 4 कंटेनर के लिए तो लोग एक साथ आ सकते हैं ना। To start, in my opinion, as per my own experience, look, geographically everybody's opinions might differ. In Bangalore, if I want to start my partnership business, at least I require 1 lakh. नॉट अ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर कर दो। हम लोग वो वर्षा ठीक है, लेकिन वो उसके लिए बहुत सारे लोगों के ओपिनियन डिफरेंट होंगे। ये सारे मेरा क्वेश्चन क्या है कि लाइक इफ दिस इज द फिक्स कॉस्ट शिपमेंट, आई नीड टू हैव दैट एग्रीमेंट विथ यू ऑल, जो भी कुछ करेगा फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई, क्योंकि वो अगर वाइड होता है देन दिस होल गेम इज what madam, what my इधर में खाली 4 कंटेनर बोल रहे हैं, और पार्टिसिपेंट कितना लोग हो रहा है? मैम आपको हर बार नए कंटेनर के वक्त एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर 4 कंटेनर के एग्रीमेंट करना है तो जॉइंट वेंचर करके वर्क हो सकता है। जॉइंट वेंचर इट्स नॉट पार्टनर, अलग से पार्टनरशिप फर्म नहीं होता, इसके लिए 4 कंटेनर के लिए रहता है सिर्फ। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन पे कर तो अलग बिल्डर एक साथ एक बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं, तो दैट्स अ जॉइंट वेंचर, दोनों का अलग अलग। लाइक वो आइदर फिर ये भी हो सकता है जैसे तू बोल रही है वैसे कि आई विल मेक अ एग्रीमेंट विथ वन एग्रीमेंट, आई विल मेंशन दैट 4 कंपनीज। हाँ, वो भी किया जा सकता है फिर, पैसा करना है और नाम पे डाल के फिर एग्रीमेंट चैलेंज है ना का काम हो but जाएगा। Sushma ji, one thing is there. Whoever you make the agreement with, one clause has to be very, very clear that the corpus amount for the entire consignment should be deposited. So what will happen is that there are 4 people who are going to be executing the trade from their company. Their names will be there in the agreement. What about the other 16 whose names are not there and they back out? So these 4 people should not be held accountable. So it has to be that if we are doing 4 consignments, then the money, approximate money, we will not be able to calculate everything to the T, but jitna bhi ho sakta hai on the higher level with a buffer should be deposited in the accounts. Maybe it should be deposited for each consignment in each person's account, but it has to be done in advance before the trades are executed. So none of these 4 people are kept liable. Otherwise, they will be liable in the agreement. मैम हम लीगल एडवाइस लेके भी काम कर सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 4 लोग अलग से काम करेंगे, किसी एक बंदे के इसमें डालेंगे, बाकी लोगों का नहीं वो है। एक काम कर सकते हैं इसमें कि लाइक अभी एटलीस्ट टॉपिक तो सबको समझाए, यू गॉट ऑल द टॉपिक, लाइक व्हाट इज द एक्चुअल गोइंग ऑन, ओके, व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो आप लोग आपस में भी डिस्कस करो उसको कैसे किया जा सकता है आगे, and tell me your opinion. No, and then we can before have a we are going to discuss, first of all, to know what is the investment, which product do you want to prefer for the fixed price as an experiment? that is important. Yes, think about I was about to ask you, think about Sushma ji, you coconut only and decide. banana. Yeah. Okay. Yes, answer. I was just going to say that maybe you decide which product you want, and then accordingly we will align ourselves, because agree that the onion is very volatile. Coconut and bananas are not volatile, but we don't have much experience in it, and we need some time to do it. But if you can also say, okay, let's go with this product, then whoever wants to move ahead with this product will start moving ahead. And I think then slowly and steadily we move to the other product. That is okay. So that is why I told you, like coconut and banana is okay for now. We will consider onion later, because onion has like Can we go with other coconut as you're telling? As Sushma ma'am is telling that consumption is less, you might require 1 or 2 in a month. So investment will be less in the terms of coconut. Yes. Agreed. I was just going to say that. Yeah, that's quite set. So anyhow, Mr. Prashant, myself and Ajay, we 3 people have this all the end-to-end documents. Okay. At least myself and Ajay can do. Why? Because some ice gate needs to be done from the Father Prashant sir. If we will have a separate discussion with all the interested people whether they want to do this fixed cost or not, where the investment also for the first month it will be drastically very less, and since it is fixed cost, everybody can expect the like moderate profits on the each consignment for the first month. So let us we can do this in this way.
Everybody can add their suggestions. Yeah. And that can be also possible. Like if we are selling 1 container per month of coconut, so the investment is less. Like now I think 12 lakhs is the corpus for the coconut shipment. So 12 lakhs you can like have in the group consignment, and every month it will be rotated. Correct. So 1 month shipment, so that means the rotation will be there. You need not to invest again in that coconut, because that fund will be rotated again. Correct. Okay? Correct. And You with can, that, in that scenario, you can have the banana shipment also. in that scenario, you can do agreements with 2 companies for 2 months. 2? First company can be mine. Second company can be Ajay. First consignment can be moved on my name. Second consignment can be moved on Ajay. So that you can complete 2 months ka agreement at once. Even your agreement charges will come down. No, not that. Agreement, what I need in the agreement, your commitment for the continuity of supply. Let's take example of 5 containers. I need that commitment on the agreement, nothing else. Okay. Okay, so in that case, like coconut investment is only 1 month, 1 container investment, it will be rotated out. So you can like simultaneously have the banana and coconut with you. Yes. Yeah. Yeah, so we can do a consignment for banana also. And for the like banana also, okay, we are saying like weekly 1 container, but we can plan for the monthly 2 containers only to reduce the investment and anything. That is also possible. And there could be different people doing that. Yes, that can be possible. I believe Global Fortune team are the people who are, it is day by day it is increasing. The number gets increased. Yeah, number gets increased actually. They are not attended meeting, but number is big. When in banana shipment, more than 70 people are there. So it is not a restricted number 2. Today it is not a restricted number actually. Tomorrow also it can be 30, but with the new people. Yes, but day after tomorrow it can be 40. That's true. So what is the conclusion today? We are saying that ki coconut and banana shipment, we are giving preference to these 2 products. Yeah. Okay. So all the people we have to shift to banana and coconut. Initially coconut. Okay. Again, Sukesh sir is saying coconut. Banana simple. See, simple. You need to do 2 consignments in a month. Okay. Where 20 lakhs is required. Where if you do it on a coconut initially, where only 10 or 12 lakhs you are required for the first month. I'm with you, Sukesh sir. As far as banana consignment is concerned, we can do farm gate negotiation as well. Need not involve the third party supplier. Yes, that can be. The only thing is we need to get hold of few regular employees or labor to do the sorting, packing, all those things, because we don't have, if we don't go through the third party suppliers, we don't have control over these laborer. So if we come across a group of people, we can handle the situation for sorting, even the washing. There's as far as banana consignment is concerned, we need to wash. Washing is there. This is an additional step apart from onion and coconut, and that is very tedious as well. Each water bunch, it has to be dipped in a water tank or filled with some permitted chemical, and it has to be dried. After that it has to be pre-cooled. So there are some additional steps in this banana shipment. If we can manage to do this one, we can beat the price. Need a lot of people for. We need to do some research on. We visit a lot of places. So people who are around this region can do this one. That is a region where we do the sourcing. Any thoughts from the people who are doing the banana shipment already or working on it? Like because as far as price is concerned, at farm gate we can procure at 14.
So for 13 kgs, it costs just 180 or 200 odd. Otherwise, if you go to through a supplier, it will go up to for 350, 400. But in that scenario, whatever the unacceptable quantity will be there, no, we should be capable enough to handle that quantity also for the selling and all. We will route it to domestic market. That we need to have a buyer, right? We need to get that That's also. okay. I will take care of domestic. Reddy sir, love you. If Reddy sir is there, don't worry. For domestic, don't worry. Rajnikant for domestic market, sir. हाँ, तो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ ना, पेमेंट तो मिल रहा है मेरे को. See, but I can like appreciate with the Reddy sir actually. They are doing so many things actually, and they are like लगता है ऐसे है, लेकिन they are doing good job in the domestic actually, in the agriculture field. Yeah. For the procurement and resources and everything. मैम कंटेनर का माल बेच चुके थे डोमेस्टिक. हाँ वही मतलब इतना कुछ किया है. It is not a easy job actually, but they have done that. That's good. Okay, so what is the conclusion then? You can start drafting the agreement, madam. Yeah. Meeting for that, so everyone will come with their own again details. We also talk with our lawyers also for that कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए. अब भी बात करते हैं मैम उस बारे में. तो वो एक अच्छे से एग्रीमेंट बन जाएगा कि जो लीगली वर्क होगा, प्रॉपरली वर्क होगा. जैसे आपने कहा 2 प्रोडक्ट है, कोकोनट या बनाना. सुकेश सर से 10 लाख रुपीज ओनली, सो आई एम गोइंग टू जॉइन सुकेश सर जी. Safer hand. I feel everybody belong to my category only. Everybody are not that rich when it comes to the financial status. I will consider everybody in my bucket. Happy with. लेकिन बाकी सबके लिए भी कहूंगी, बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब जो बोलते हैं उनका समझता है, वो समझते भी है, but those who are not speaking at all, they are just mum. लेकिन उनको मतलब थोड़ा कमेंट करें आपकी क्या राय है. Ma'am, only 5 or 6 members spoke throughout this session. One important person didn't add his comments, madam. One very important person in the group didn't add his comments. That is Mr. Prashant. Yeah. He's hiding. Please unmute yourself, open your camera. Okay. We want your input here. मैम 2 चीजों पे और ध्यान देना है कि जैसे कि आपके फ्रंट ने बोला था आपका जो भी रेट रहेगा कि कैपिटल आप दे, तो वी आल्सो कैलकुलेट दैट कि है ना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर उसके इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमको वो होता है या नहीं, या ओनली फॉर लर्निंग वी आर इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग दैट, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतना मिलेगा. दैट्स नॉट अ लर्निंग प्रोसेस. राइट. मतलब इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा 1 महीने का, अगर 1-1.5 महीना लगेगा पैसा आने में, तो 1 महीने का जो इन्वेस्ट किया उसका कैलकुलेशन कैसे वर्क होगा, वो भी सोचने वाली बात है. वो भी सोचो, लेकिन उसमें ये एक बात है ना कि लाइक अगर आप खुद डालते हो कर रहे तो लॉसेस जाएंगे, तो वो शायद लॉसेस बच सकते हैं, बट यू आर लाइक, सो व्हाट इज द गेन फॉर यू, यू नीड टू थिंक ऑन दैट. मतलब बिजनेस लर्न करना है, वो सोचने वाली बात है. राइट. तब 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के लिए ये भी सोचना है. जा सकते वो सोचो आप, और उसके हिसाब से फिर आगे डिसाइड कर सकते हैं हम. मतलब एक मीटिंग और लगेगी हम लोगों को शायद इस सब के लिए. नहीं, वो हम ले लेंगे, उसमें कोई बात नहीं. बस इसीलिए मैं बाकी सारे लोगों से पूछ रही हूँ व्हाट इज देयर ओपिनियन एक्चुअली. यस प्रशांत सर, अनम्यूट करो. Yeah, we can go with coconut, madam. Actually, we have done a lot of research. He is also coconut person only. Actually, Prashant is from Pollachi. We visit Pollachi like that. I know. You have visited Pollachi, right? Yes, madam. Yes. That is from Pollachi only, madam. Yeah. No, madam. No, is misguiding. Okay. Actually, we met in Bangalore, madam. We met in Bangalore. I think like here there are 2 groups. Maharashtra people are different, like Delhi people are different, and the Karnataka and South India people are different.
So they are fighting each other. Like Maharashtrian people, I can see their faces, और जिन्होंने faces दिखाए नहीं उनके लिए नहीं वो कोकोनट की बातें कर रहे हैं, बनाना हमारे पास है तो हम बनाना क्यों नहीं बेच सकते? And I can also give you one more facility where we can negotiate better, because I am ready to take some domestic consignments. So in total, we can negotiate with the supplier. So I am ready to take one domestic and I am ready to take one export. So it is almost like 38 tons from a particular supplier. Yes, yes. So we can negotiate the price like anything there. That can be. Yes. So अरे बाकी लोग बोलो तो सही, क्या लगता है? राजेश जी there, Suma, Smita, Giri also, Dhanashri, Raj, Umesh. Ma'am, not everyone cannot be mute like this. We need inputs, opinions from everyone. Actually, Otherwise, inputs from everyone. तब जाके तो पता चलेगा what is actually they want. yes, we might get good ideas as well from other people हो if they सकता है. if they come up with their opinions. But hardly 5 or 6 participated it so far in the session. So चलो बोलो क्या लगता है सबको? सुषमा, स्मिता, राजेश, विकास. Coconut, madam. I will go for coconut. देखो सभी को है ना नारियल फोड़ के शुरुआत करनी है. Whoever agrees for the coconut, they will get one thunder coconut. I know Suma is also saying coconut only. I also with coconut. I know that. They join with South India only. Okay, Everybody will Raj get जी one आपका thunder क्या कहना है? coconut. Home delivery. I don't know much about coconut. राज जी आप unmute करो. it's not just selecting the product. We need their opinions as well, their ideas, if they have any, their thoughts. हाँ राज जी बताइए. Depend on investment. Investment कितना होगा वो तो सब ठीक है, लेकिन जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए. Okay. Yes, Rajesh ji. Hello. Yes, sir. Previously, I had one banana shipment experience, so I'm preferring for banana. Okay. लेकिन हाँ वो ठीक है, प्रोडक्ट यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, लाइक आप सब लोग कुछ भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसमें कोई इशू नहीं है. बट वट एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिक्स कॉस्ट एंड एग्रीमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक सो गिव योर ओपिनियन ऑन दैट. आपको क्या लगता है, कैसे जाना चाहिए, व्हाट विल बी द बेनिफिट? Market available, domestic market available. So for this cost, we are getting to the bill. Yes, ma'am. Planning Can for I speak, ma'am? 4 to 5 containers. 2 minutes. Meanwhile, the cost goes. The cost of product will increase in domestic market. So it will be some adults cost. Because it is a group shipment. So anyone who come to know that this is going to happen the profit, will definitely will go out from there. Hi, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. Yes, good evening. How are Yeah, you? it's James here, ma'am. Yes, yes, tell me. Ma'am, as we discuss now, we discuss as 1 month 4 container, right? My question is now I can join for the one. I can learn for only one container also. Only one shipment. I'm not supposed to join all the containers, no? Each person can join only the one container, no? We can participate in only the one container. Not all the 4 containers, no? Every person will participate in every agreement, not on the consignment. If the agreement has what 5 is the investment consignments, for the? What is the if the investment for agreement the have, each person? I will tell. Yes. So if agreement has 5 containers, then the participant is going to invest on the entire 5 containers, and as it is as same as the investment should be accumulated at the initial stage of this procurement and everything. That is one. Number 2, the financial things. That is what we have been discussing. How can we reduce the investment? For an example, if it is onion 4 containers, every time the price is very volatile, we can't decide.
what is the less riskiest possibility, and the where the investment also can be the least part, is that coconut. Okay, only one container per month, that is one, where the 12 lakhs is what required for that. And whatever the money you have invested for the first consignment, that you are going to get realized in the very second month. By that time you can already have the second month consignment in hand. So money realization, everything is taken care. And when it comes to the individual investment on the agreement, since everybody are going to participate in this agreement initially, in all the groups, whoever are there, it says everybody are going to invest here, even the individual investment will come down. So individual investment will come down. Second, whatever the money you are investing, that is invested for the 2 containers or the 3 containers, and your money will be rotational. After completion of 2 containers, you hardly require only 2 containers ka amount. For the third consignment, you have already the amount. Yes, I understood now. That I understood. Now thing is, the people are ready to invest. We speak on now what people are have, is it okay? And whether should we agree with this point? No. Yeah, that's what everybody is providing their feedback. Yeah. Okay. So when it comes to the investment part, we have diluted as low as possible. Okay, we have diluted. We have made it like 2 consignment or 2 consignments ka amount we required when it comes to the coconut. And since many people are there here in the group, सुषमा मॅडम, हे खूपच कॉम्प्लिकेटेड झालंय, काहीच समजत नाही नेमकं काय. तुम्ही एकदा समजावून सांगा की हे फिगर आउट करा की हा असं आहे तर काय करायचं. 2 कन्साइनमेंट, 3 कन्साइनमेंट, 4 कन्साइनमेंट, काही समजत नाहीये. नीलकंठ little bit complicated. सगळी परिस्थिती कॉम्प्लिकेटेड झाली, काही समजत नाही. I think one person is one container is participating is very good. I think if it is 4 consignment, it's very difficult. I don't know. Then what is the decision? No, but then if it is only 1 consignment, then how do we maintain the continuity? Because we don't know who's going to participate in the other one. Hello. So then how do we maintain continuity? And how does Shipma get her consignments? See, अगर हम 5 कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो 5 कंसाइनमेंट के लिए जितने लोग थे उतने पूरे 5 कंसाइनमेंट के लिए नहीं 2 कंसाइनमेंट रहेगा. नहीं. The agreement is for 5 consignments, but the amount we required is for only 2 consignments. का अमाउंट लगेगा क्योंकि तीसरे के लिए वापस आ गए ना, तो 2 कंसाइनमेंट का अमाउंट लगेगा ही लगेगा उधर. अगर कोकोनट है और बनाना अगर महीने में 2 बार है, तो आपको 4 कंसाइनमेंट का अमाउंट लगेगा. हाँ, ये तो होता है. So the first thing is, वो तो कंटिन्यूएशन में we need to decide on the commodity, then we will know what is the corpus amount needed and for how many do we need to go. तो ये नहीं, कमोडिटी के कॉर्पस इधर में तो किसी को जबरदस्ती ज्वाइन होने को नहीं बोल रहा है ना, किसको मर्जी है उसको एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने दो. See, so for all people, options are available with you. It is a flexibility to choose any options. No any force on anybody. Like यही करो वही करो, सब कंटेनर में जाओ या एक ही करो. That is up to you. So one option is available. You can always like have your own shipment, and I will accept that one shipment on the commission as per the market. This is the one option for all of you. Second option, you can plan for 1 container only, like Onion has done. Like you can plan for the banana also, you can plan for the coconut also. That will go as per the market. So, but the main thing is, आप ग्रुप में प्लान कर सकते हो. 15-20 लोगों में प्लान करो, जो भी कुछ अमाउंट निकालो, शिपमेंट करो, take all the practical experience, but that shipment will go as per the market rate. वो कमीशन के बेस पे जाएगा. This is the second option you have. Either single आप अपने आप करो, second ग्रुप में करो. This is like 2 options. The third option is, you can have an agreement with me for the fixed price. But we will make an agreement for the at least number of containers. To like भी analysis करके 5 कंटेनर 10 कंटेनर जो भी कुछ होगा उसका agreement किया जाएगा. So you need to adhere the agreement norms. You should not void that agreement. आपको 5 कंटेनर का एग्रीमेंट किया है तो 5 कंटेनर का एग्रीमेंट फुलफिल करना पड़ेगा. उसके लिए जितने लोग लगेंगे, जितना कॉर्पस लगेगा, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा. और वो एक पेज पे मतलब आके वो सारा अंडरस्टैंडिंग करके मतलब फाइनलाइज करना पड़ेगा. दिस इज द थर्ड ऑप्शन.
And the fourth option, like someone has suggested me, like I will do the shipment, you will just invest in that, you will learn everything, but whatever the profit and loss, it will be with me. This is the fourth option. So the options are open for you all. That is about the group shipment के लिए जो निकाले हैं. So that is up to you, like which option you want to go ahead, and we can make a group accordingly. I am not referring the entire group. I'm just putting my own opinion. I want to. I just want to know what is the group shipment with fixed prices. How much? How many containers you required? With it, what is the tendency? And the product is coconut. This is my own opinion. This is what I want to know. For coconut, what is the tendency and how many containers you want to put into the agreement? Yeah, that for banana and coconut also, I will give you that. That my analysis and the my backend is already working. So I will give you in this week only. Okay, madam. I think once that is given, at least a few things will be clear. Then people can start also thinking a bit in terms of making some decisions from their end. So for your just for your reference to go ahead with the discussions, I will just giving you like for coconut, it is not sure number I'm telling you. It may change less or more. It will depend on the calculations and working. But for coconut, we can consider for the 5 containers, and for banana, we can consider like if we are making 2 shipments in a month, then at least we need to have 6 containers. Okay, but you are still going to work it out. You are still going to work out the modalities properly and then get back to us. Yes, so we can make a decision. It is already like halfway done. It will be completed within 2 days. Might be I will give you all that. No, 5 containers of coconut. What is the tenure? Monthly Tenure, once, 5 months. either like that. That is I am checking. Either monthly 2 containers. If there are monthly 2 containers, then again it will be the 6 containers for 3 months. Yes. Yeah. Okay. Like that. So what are 6 containers? Banana also 6 container and coconut also 6 container. If monthly 2 containers. Monthly 2 containers for banana. Actually, monthly at least banana, at least weekly 1 container. Monthly 4 containers is the slab actually. People are doing like that. Okay, if we want to beat the fixed market volatility. Like if we the corpus is required high and the number of people should be there, then investment will be there. So we can divide it in the monthly 2 containers only. I need to work out on that, but at least I want to say that for banana we can ship 2 containers in a month, and for coconut we can work out 1 container per month. But at least I need to work out in the back end. Then I can give you that concrete. Okay. Yeah. Okay. Okay, so I guess we'll wait for you first to get back to us, and then we'll take it forward. But yes, meantime, at least. And when will be coming back onions? Onions, actually, we need to think on that. Onions also, if anyone want to do, we can do in the fixed cost. But same thing, onion, at least 3 container or 4 containers in a month. Okay, I'll be go back a bit on. Okay. Yeah, that we can discuss. But for you all people, I just want to say, if we need to work on, or we are really interested to work on the fixed cost, time is the biggest factor. We need to consider that. Should not lose that time. Otherwise, whatever working we are doing now, it will be waste, because you will come with me after with the solutions in the next 2 months. There is no any use of that. So start working from now. And Kushma ma'am. Just 1 minute. Let me finish first. Start working from now. Whatever your commodity, do the analysis, background work. जो भी हमने अभी डिस्कस किया, agreement, terms and conditions, what is your clauses, जो भी कुछ होगा, start working from now. Discuss with the group of people who are interested with your commodity and whatever. And जब भी हम बात करने के लिए बैठेंगे, तो at least वो उस टाइम पे concrete कुछ तो discussion होगा. जैसे वो opinion and वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है? Okay. और जो भी कुछ होगा 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन के लिए आप रेडी हो, वो भी आप डिसाइड करो आपस में उसके साथ. तो फिर उसके हिसाब से भी ग्रुप किए जा सकते हैं. जैसे अभी बनाना का चल रहा है, अगर किसी को लगा नहीं हमें 4 कंटेनर 6 कंटेनर नहीं भेजने हैं,
let we just have only one experience of one container. We will do it in the commission. Okay, you can go with that also. Not an issue. The agreement we required if we are consider that is a fixed cost. Agreement से fixed cost ले लगेगा, बाकी किसी के लिए agreement की जरूरत नहीं है. Okay. मैडम हम अगर अग्रीमेंट पे जाते हैं तो अगर हम कर सकते हैं तो दो अलग अलग भी कर सकते हैं ना, कोकोनट का एक अलग एग्रीमेंट, बनाना का एक अलग एग्रीमेंट. हाँ, बनाना का अलग ही होगा, कोकोनट का अलग होगा. नहीं मतलब हम जितने भी कैंडिडेट है वो अगर जिसका इंटरेस्ट बनाना में है वो बनाना में चलेगा, जिसका कोकोनट में है वो कोकोनट. सेम वैसे ही होगा. वो जिसका इंटरेस्ट बनाना में वो बनाना में काम करे, जिसका इंटरेस्ट कोकोनट में वो कोकोनट में जाए. लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा मैडम? वही तो जैसे अभी मैंने बोला ना, अगर कोकोनट है तो पकड़ के चलो 6 कंटेनर्स बनाना के भेजने, 6 कंटेनर्स कोकोनट के भेजने. तो डिसाइड. So we should make the two different teams, na? Yes, 2 different things. Also, what I suggest, see, everybody have their own groups. What I suggest is we are only thinking about one side, investing the money. Okay. What about the distribution of money? After each consignment, whatever the profit or loss, you are going to distribute then and there, or you are going to distribute at the end of the agreement. Even that needs to be discussed. वो वही तो मैंने कहा, इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड होंगे टेक अ पोल ऑफ दैट अपने अपने इसमें, एंड फिर वो उसके हिसाब से फिर से अदर ग्रुप क्रिएट करो, और फिर ग्रुप में जो भी आपने सुकेश जब भी अभी जो कहा, सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे फिर. सो यू नीड टू डिस्कस विद अमंग. छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे फिर, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो भी कुछ होगा. So don't only the entry part, please also think about the exit part. Yes, actually. Yeah, I think that step can be taken up once we decide on which way we want to enter. Yes. Right. So it will have to be definitely discussed. It's a very important aspect to look at. But at least first, let's see how many are going to come in, and then we'll take the call. Because the exit will also depend upon what is the turnover. Is it going to be once in 2 weeks, once in a week, or it's going to be once in a month? Based on that, the exits and distributions can be then thought about. Okay, then अभी तक के लिए तो clear. Okay. हाँ मैडम. Clear with confusion, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Clear, no confusion. Clear with confusion. Even if we continue the discussion for 2 hours, there will be some percentage of confusion. वो तो होने वाला ही है. और 1 मिनट मैडम. हाँ बोलिए सर. हर शिपमेंट में कितना खर्चा हो गया और कितना बचा है करके उन लोग तभी ग्रुप में डाल देना है. करेक्ट. यस. जैसे तेजू को अभी तक मेरे को नहीं मालूम पड़ा है कितना खर्चा हुआ और कितना बचा हुआ पैसा. नहीं, बराबर है. तो इसमें क्या होता है, हम सभी हानेस्ट है करके हम दिखा रहे हैं. मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी एक ही ग्रुप है, एक ही फैमिली होता है. एक ग्रुप हो जाएंगे तो फैमिली पीपल के पास पूरा वही रहना है, ट्रांसपेरेंसी. यस, डेफिनेटली. रेड्डी सर, कुछ बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पे. अनियन शिपमेंट का हर चीज जितना एक्सपेंस हुआ है, हर चीज अपने ग्रुप में शेयर हुआ है. यस. इस बात पे मैंने क्या बोल रहा हूँ, आपने एक पीस में डाल के रखते रहेगा, ठीक, मेरे को मालूम है, लेकिन वो कितना हुआ कितना बचा हुआ करके उसका उनका कहना है कि कंसोलिडेटेड एक ही डालो. कंसोलिडेटेड. P&L रिपोर्ट. कंसोलिडेटेड डालो. कंसोलिडेटेड भी डाला हुआ है ना मैम, सब कुछ डाला हुआ है. कंसोलिडेटेड भी डाला हुआ है. See, so initially हम लोग ने क्या किया था, जैसे कॉस्ट इंकर कर रहे थे वैसे ट्रांसपेरेंटली वो कॉस्ट हम शेयर कर रहे थे. अभी समय आ गया है कि लास्ट में एक बार लास्ट में होगा. डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना. सर एक काम कर सकते हैं. नहीं, मैं इसमें बीच में सिर्फ सबको ये करूंगी कि लाइक अभी जो भी पेमेंट आपका मिलेगा, तो पेमेंट मिलने के बाद व्हाट एवर यू आर गेनिंग, व्हाट एवर यू आर इन्वेस्टेड, वो सब सब करके फिर वो फाइनली डाल देंगे. सो दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. और एक मैडम, जो भी
आपने दुबई में खर्चा करने के लिए जितना AED चाहिए उतना पैसा आप रख दीजिए, क्योंकि हमारा दूसरा शिपमेंट के लिए हमारा INR से AED से कन्वर्ट करने का पैसा नहीं खर्चा होना, कन्वर्जन रेट। हाँ, तो वो जब भी आपके बैंक में आएगा तब वो आपको सब पता चलेगा ना। अभी तक बैंक में आया ही नहीं ना पैसा, तो अभी नहीं पता चल सकता वो। हाँ बैंक अभी हम क्या स्टेटस बोल ये रहे है, हैं, पहले ही जो एक्स्ट्रा ऑनियन हमने भेजा है। ओके, इनका कहना है कि वो सब आपने कॉस्ट इंक्लूड करके भेजा है क्या, ऐसे कहते हैं? नहीं, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि आप जैसे हमने महीने के 4 शिपमेंट करने हैं, तो आप बार बार मतलब पैसा एक शिपमेंट के बाद आप पैसा मत भेजिए। 4 शिपमेंट का जो टोटल पैसा होगा एक बार में ही भेजिए, ताकि कन्वर्जन रेट को बचा सको, क्योंकि अगर 4 बार आप पैसा भेजोगे तो कन्वर्जन में बहुत सारा पैसा चला जाएगा। उनका ये कहना। लेकिन वो 4 बार ही भेजना पड़ेगा ना, एक समय पे नहीं भेज सकते ना। वो हर शिपमेंट के हिसाब से ही पैसा आने पड़ेगा एज पर द बैंक रूल। हाँ, बट उनका कहना यही है। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सभी करेक्ट है। जो दुबई के करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज करता है ना, उसका रेंज का हम सभी लोग एग्री करके ही आपको दे रहे हैं। उतना आप पकड़ के दूसरा जो है वो बेच सकता है ना। मैं वो जो बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार हमारा इंडियन करेंसी उसमें जाके इतना काट के ये बनता है। नहीं, लेकिन वहां पे दुबई में आप इंडियन AD टू INR टू AD ऐसे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे जो मार्केट से पैसा मिल रहा है दैट इज ओनली दिराम। सो वी आर माइनसिंग, वी आर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इन दिराम ओनली। तो वहां पे कोई कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है ना। उधर पोर्ट से जब जो मार्केट यार्ड को जाता है उसका खर्चा तो एड्स में ही होगा ना। हाँ, वही तो मैंने बोला ना, सेम करेंसी भी हो रहा है, तो वहां पे कन्वर्जन कुछ हो नहीं रहा है ना। मार्केट में दिराम ही मिल रहे हैं, आपका खर्चा भी दिराम भी हो रहा है, तो वी आर डिडक्टिंग दैट दिराम ओनली। जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो आपको भेजा जाएगा, बट इट विल बी इन द डॉलर ओनली। दिराम नहीं आता यहाँ पे, डॉलर आएगा, क्योंकि आपकी इनवाइस की अमाउंट डॉलर है। अच्छा, तो जो भी आपके बैंक में आएगा इंडिया में वो डॉलर में आएगा, और फिर आपकी बैंक आपको डॉलर से INR कन्वर्ट करके देगी। तो वहां पे कोई कन्वर्जन लॉस नहीं है। अभी जो INR टू डॉलर का जो जाएगा दैट इज योर कन्वर्जन इन योर बैंक, क्योंकि दुबई में फिक्स स्टैंडर्ड रूल है डॉलर टू दिराम कन्वर्ट करने का। उसका फिक्स कन्वर्जन है, वो कभी फ्लक्चुएट नहीं होता। तो हमने डॉलर बना के डॉलर से ही उन लोग कन्वर्ट कर लेता है। आपको डॉलर ही कन्वर्ट करना है। अच्छा अच्छा, ठीक मैडम। ओके, ठीक है, सबके लिए जो भी कुछ है काम करते रहो, और फिर देखते हैं, फिर इस हफ्ते में फिर से मिलते हैं। मैडम और आपसे एक विनती है, वो जो परमानेंट ग्रुप में है ना, उनका एक ग्रुप बना के दे दिए ना। किसका? जो परमानेंट आपके साथ रहता है ना, मैंने मेंबरशिप लिया, कैसे लिया मेंबरशिप आपसे? लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया ना। हाँ, वैसा लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला पूरा का एक ग्रुप बना के रखिए ना। वो इंडिया में भी हो, बाहर देश में भी हो, किधर भी हो। एक्चुअली वो टेलीग्राम पे काम चल रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या मैंने देखा, इसीलिए मैं सबको ग्लोबल फॉर्चून 1 2 3 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं टेलीग्राम में लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि टेलीग्राम में आप सब लोग एक साथ रहोगे, एक ही ग्रुप में रहोगे। व्हाट्सएप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ना टेलीग्राम में वो क्या होता है, सभी लोग आता है उसमें। सिर्फ जो प्लेटिनम मेंबर चाहिए। महीना में रहने वाला भी रहता है, 5 महीना में वो 1 2 साल का रहने वाला भी रहता है ना। नहीं, वैसे नहीं है। जो भी आपके ग्रुप में वो लाइफ टाइम वाले ग्रुप है। हर एक की हर ग्रुप वाला हमारे अलग है। सब लोग एक ग्रुप में खिचड़ी नहीं बनाई है। सिल्वर वाले अलग है, गोल्ड वाले अलग है, हाँ प्लैटिनम वही वाले बोल अलग रहा है। हूँ, वही बोल रहा हूँ। आप सारे लोग जिस ग्रुप में हो दैट इज फॉर द लाइफ टाइम ओनली। अच्छा अच्छा, तो बाहर वाला भी ज्वाइन होता है कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सकता से? ना, उन्होंने उतने पैसे दिए ही नहीं है ना, उतनी कमिटमेंट है ही नहीं, तो उनको कैसे मैं डालूंगी वहां पे। ना उनका नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे लाइफ टाइम वाले अभी इंडिया में कितना लोग है, आपने दूसरा बाद में किया था ना, उधर भी स्टूडेंट ज्वाइन हुआ ना, उन लोग भी हमारा ग्रुप में आता है।
अरे वही तो मैंने बोला ना, व्हाट्सएप की लिमिटेशन से। हाँ बोलो बोलो वर्षा। की सोच है तो बाहर के कंट्री वाले हमारे ग्रुप में ऐड करके चाहिए, कैन कनेक्ट विद देखो देम। आपके ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स है, अभी आपको सबके साथ, जैसे त्रिवेणी सिंगापुर में है अभी, तो वो तो दूसरी कंट्री की ही हो गई ना। वैसे भावना कनाडा से है, तो वो भी दूसरे कंट्री से ही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है। नौशाद सऊदी से है, कुवैत से कोई अलग है, दुबई से कोई अलग है, तो दे आर ऑल इन द ग्रुप ओनली। लेकिन उनके नाम के यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं ना कि उनकी कंट्री क्या है, इसलिए वो आप नहीं पहचान पा रहे हो इसमें। आई नो दैट। हाँ, दैट इज पढ़ाई ओनली का प्रॉब्लम है ना। हाँ राइट, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। तो वो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा सबके साथ, ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके वो बात मतलब बातें आगे होगी और फिर आगे चलेगी। हाँ यस सर। त्याला मी विचारलंय की मला एकदा दिलं की 10 तास औषधं द्यायची नाही, मग आता उलटी केली तर परत परत कशी द्यायची? पळावता रात्रीचं फोन. नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझा। नहीं, I think he's talking internally. सुकेश बात करता रहेगा रेड्डी सर से और मैं कुछ भी नहीं समझूंगी उनके लैंग्वेज में। No, it is not from Reddy sir. अरे नहीं नहीं नहीं, उमेश बात कर रहा था, मैं जस्ट आई एम अज्यूमिंग दैट थिंग। जैसे आप दोनों बात कर रहे थे, आई एम टोटली ब्लैंक व्हाट यू आर टॉकिंग। नाही नाही मॅडम, मुलगा जरा आजारी आहे, त्याच्या औषधाचं चाललेलं. सॉरी. ओके ओके ओके, ठीक है सर। सबके अपनी अपनी लैंग्वेज है। सॉरी, मी अनम्यूट करायला विसरलं त्याच्या औषधांबद्दल. Our mother language मला would be वाटलं काय different. चाललंय कशाला चाललंय म्हणतात का काय उमेद सर. नाही 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 नाही, मुलगा आजारी होता, त्याला औषधं पाजायची आहेत, त्याच्यावरून थोडंसं कॅल्क्युलेशन चालू. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। Yes. ठीक है मैम, ठीक ओके है, गुड थैंक यू। नाइट. ठीक है ओके, तो उद्या परवा आणि ओके 6, 7, 8 3 days वी हैव दैट। so 3 days का जो सेशन होता है ना वो है। so if any one of you are new and you any one of you are old and you want to join it again, so tomorrow, day after tomorrow and day after tomorrow 6, 7, 8 okay we are meeting. You are now in Pune. yes I'm in Pune, I'm in office now. अभी मैं घर जाऊंगी। Okay, तो हम मिलने के लिए आ सकते हैं आपको? हाँ यस यस डेफिनेटली। मैं फ्राइडे नहीं थर्सडे तक हूँ, देन अगेन फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ऑलरेडी प्लान। Okay. आउट ऑफ स्टेट। Okay. ठीक है। Yes ma'am. चलो फिर, गुड नाइट, टेक केयर। Thank Yes. यस एक्शन लो। Good night everyone, take care. बताओ। ओके बाय।